इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मौन बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा रहा और कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। आज आप लोग जो सर से क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज 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 शॉर्ट पूछिए और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो रहते हैं या शेयरिंग वो मत करिए आप। और जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बॉडी में हो रही है, कितने बार तो सर ने कहा है कि एक्सपीरियंस करिए, सिर्फ विटनेसिंग करिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। पर आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सर के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल पूछने का हक है आपको और डाउट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग डाउट क्लियर करिए। पर मैम तो चैट बॉक्स में डाल दें क्या हम क्वेश्चंस? हाँ, चैट बॉक्स में भी डाल देंगे तो अच्छा है। माही तुम थोड़ा सा देखना बेटा कौन से हैं क्वेश्चंस, क्योंकि खेमजी यूट्यूब में देखते हैं तो तुम माही इधर ही देखना जी। और सर भी देखते रहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं उसमें सबके टाइम भी जा रहे हैं और इतने कम दिन बचे हैं तो मैं चाह रही हूँ और ज्यादा कॉन्सेप्ट हम है ना। और वैसे ही फिर सैटरडे संडे हमारा मौन है तो सर से नहीं बोलेंगे तो क्यों अपना टाइम और सब टाइम वेस्ट करिए। यस मैम, विजडम शेयरिंग। जो 2 दिन के मौन है वो मैं आप लोग के साथ जरूर बताऊंगी। पहली बार मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मेरे कोई इमोशन ऐसे नहीं रह गए। अब होंगे और डीपर में होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि इतनी जल्दी क्लीन नहीं होंगे। पर फिर भी मैं कल बहुत बहुत काम थी, जबकि बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। पर उसके बावजूद कल मुझे जितनी शांति मिली और जितना कल सेल्फ टॉक मेरा कम हुआ, मतलब मुझे अपने ही स्टिलनेस, अपने ही अंदर की शांति से अजीब सुकून भी मिल रहा था और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि मैं इतना शांत क्यों हो गई हूँ। वो दरवाजे में खींचना जाते तो बहुत अच्छा लगा कल का मुझे। वाकई हम लोग को हफ्ते में 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, परसों मुझे बहुत तंग कर दिए गए, बहुत बहुत तंग कर दिया गया, मुझे बहुत चैट करना पड़ा। पर कल मेरे लिए बहुत धीरे भर रहा है, वो टंकी जो है बहुत धीरे भर रहा है। क्या अब मेरे को कोई मैडम यही हुआ, सैटरडे को थोड़ा कम अच्छा हुआ, कल बहुत अच्छा लगा। सैटरडे को मेरे को चैलेंजिंग बहुत आया मेरे, मगर मैंने काफी उसको फेस किया और मेडिटेशन किया, मगर मेरे को संडे को कल बहुत अच्छा रहा मैडम मेरे लिए। हाँ, देखिए ऐसे धीरे धीरे हमारा मन का भी अंदर शांत होते जाएंगे और हमारा सेल्फ टॉक कम होते जाएगा, क्योंकि माइंड भी कंडीशनिंग हो जाता है कि ये मौन रहेगी ज्यादा, सर क्या फोड़े, चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो कल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये तो बहुत अच्छा है कि सर आके हमको प्रैक्टिस करा रहे हैं, नहीं तो मौन के बारे में जानते तो हम सभी हैं, पर कभी करेंगे सीधा 11 दिन नहीं, बीच बीच में भी हमको करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि सर के आने का टाइम हो रहा है और बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछिएगा। मैं क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। प्रदीप सर आ गए हैं। नमस्ते सर। Okay, namaskar everyone. Let us start with meditation. First, for 1 hour, let us prepare for meditation. Yes sir. फ्रेंड्स, हम सभी लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। 1 घंटे का मेडिटेशन है। Drink some water and gently close your eyes. Relax your entire body and start observing your breath. Anita ji, you please play the music. प्ले करना सर म्यूजिक? Yes. So we do 1 hour meditation. Please don't open your eyes. Let us enjoy the meditation.
Final 10 seconds. Gently place your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You may slowly open your eyes and you can drink water immediately. Thank you, sir. So, how was it the weekend? So, we'll first begin with the experience sharing of the weekend, and then we go ahead with something interesting. Yes. तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग बता सकते हैं। ये जो सेकेंड वीक में आपका मौन रहा, कैसा रहा आप लोग के साथ, और जो रॉ फूड के बाद आप लिक्विड डाइट पे आए हैं, उस समय अगर कोई डाउट हो रहा है या कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तो बताइए। सर, मैं अपना बताना चाहूंगी। Yes, madam, go ahead. पिछली बार जब मैंने मौन रखा था तब काफी इमोशनली अनबैलेंस थी, पर इस बार मैं बहुत बहुत काम थी, बहुत शांत थी। और कल तो ऐसा था कि सेल्फ टॉक ही नहीं हो रहा था, रीडिंग बुक और साइलेंस, तो बिल्कुल एक्सटेसी जो बोलते हैं वो महसूस कर रही थी। कल सबसे अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू जो आप हम लोगों को मौन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर म्यूट में है आप। I'm saying it's your practice. But sir, you are the mentor one ना, जो बोल रहे हैं और हम लोग मान रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Yes, good, happy for you. Next. हाँ शानू जी। Good evening, Pradeep ji. Thinking of others in my mind, I just bulleted my points in my notebook and I'm reading now. It's indeed a wonderful experience, Mauna with diet. Firstly, regarding my emotions point of view during Mauna. First day, I cried a lot by thinking of everyone who came across in my life. It is a tear of gratitude. Second day, again, I cried aloud for long hours for no reason, but my heart was so light after that. Secondly, regarding my thought process point of view during Mauna. There is a sudden shift in my mind about detachment towards materialistic world. Earlier, I have a big wish list of buying this, buying that, a long, very long list. Completely, I dropped all my desires and recycled my long list. Secondly, a strong thought about a detachment towards relationship also, and I want to drop my identity after attending ego and self session. This thought arose during Mauna and putting my efforts practically to work on it. Next, I have a strong intent to do vigorous service to help everyone without any expectation and also without pity. Sort of an inducement to teach values to orphanages, prisoners, and old age home people who needs love and who lacks of love and mental stability. And the dark circles around my eyes are getting faded these days. Last but not least, it is very nice to remain away from phones and electronic gadgets. Decided to continue Mauna once in a week. On the whole, it is a great pleasure in being alone within myself, only myself, Mauna. Thank you for your wonderful guidance, Pradeep ji. Good, wonderful, madam. So, in such a short notice, you have gone through a great realization. It's a very inspiring story. Thank you. Right. So next,
Vandana. यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं बोलिए। मैं 10 साल से सर मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन आपका मेडिटेशन जो मैंने किया इंस्टेंट, बहुत मैं खुश हूँ और ये पूरा डाइट में फॉलो कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने के लिए, इतना अच्छा लगा। उसके बाद मेरा क्या था, कुछ इश्यूज थे सर, हेल्थ प्रॉब्लम 10 ईयर्स से थे। जैसे मैं बैठती थी 10 साल से, तो घुटने का प्रोसेस होता था, मोड़ती थी, मतलब ध्यान लग नहीं पाता था सर, और मैं बहुत बेचैन हो जा, लेकिन फिर भी मैंने कभी ध्यान छोड़ा नहीं सर। 1 घंटा मैं रेगुलर करती थी। जब ये 2 साल से, जब ये क्या बोल रहे हैं, लॉकडाउन जब सर हुआ, तब से मैं 2-3 घंटा अपने ध्यान, क्योंकि सर हमेशा बोलते थे, सर बहुत सा जूम सेशन लेते थे, बोलते थे 2 घंटा 3 घंटा, मैं 3-3 घंटे ध्यान करने लगी। फिर भी वो पाँव का जो प्रोसेसिंग था, नी पेन, एंकल पेन, वो कभी इतना पेनफुल सर नहीं हुआ। कम होता था, लेकिन कभी हमने 10 ईयर से मैंने कभी मेडिसिन नहीं लिया। मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहती थी, औरों को मैं ये दिखाना चाहती थी, जो नहीं सर जब बोलते हैं नो मेडिसिन नो डॉक्टर, और कभी इतना ज्यादा मेरे लिए पेनफुल नहीं। मैं सारा घर का काम करती थी, सब कुछ करते हुए ये जब इंस्टेंट वाला मैं की, तो वो करीब 1 वीक पहले सर, वो जो पाँव का जो प्रोसेस था, जिससे मेरा ध्यान नहीं लग पाता था, वो बिल्कुल चला गया। कभी कभी आता है, रेयर, किसी दिन जब मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए सर जब मैं बैठती हूँ। और दूसरा था कि ये मेरा फैटी लीवर सर हो गया, तो अचानक से मेरी छोटी डॉटर है, वो भी ध्यान करती है, और जूम पे बच्चे और ये सबका जूम, तो बोलती है मम्मी तुम अपने आप से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती, ये जो तुम्हारे पास फिर से दोबारा फैटी लीवर 2 इयर्स बैक हुआ था, फिर से आया। तो मैं जब क्वेश्चन पूछी, तो सर आपका सबसे पहले हमको लिंक मिल गया। मैं बोली जो इससे मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी। और दोनों पाँव में काफी सूजन थे सर, तो जब 1 वीक हुआ तो वो सूजन घटने लगा सर, और अभी एकदम बिल्कुल कम स्लाइट है। अब वो मैं जानती हूँ जो वो मेरा इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह आपका डाइट, मोना, सब कुछ मैं बहुत सीरियसली आई एम फॉलोइंग सर। तो ये बहुत अच्छा लगा। सेकेंड, थर्ड पॉइंट ये था सर, जो ये सैटरडे को मॉर्निंग में जब मैं उठी 5 o'clock, तो बैक में अचानक से बेली के पीछे बहुत ज्यादा पेन, बहुत पेनफुल। तो मैं शायद मैसेज भी की थी शायद सर, आपने देखा नहीं, कि मैं ऑइंटमेंट क्या लगा सकती हूँ। मेरी डॉटर बोली मम्मी ज्यादा पेनफुल है तो लगाओ, तो मैंने 1 बार लगाया, लेकिन वो कम नहीं हुआ सर ऑइंटमेंट्स, क्योंकि मैं समझ गई थी कुछ पास्ट कर्मा है या कुछ मैं पास्ट सोचती हूँ जिसके कारण मेरे बैक में ये आए। तो मैं लेकिन सारा काम की सर, इतना ज्यादा पेनफुल नहीं हुआ अभी तक। आज 3rd डे है और मैं सारा कर भी रही हूँ, बस थोड़ा सा जब लेटती हूँ बेड पे या झुकती हूँ तो थोड़ा पेन और वहां पे स्टिफनेस है। और मतलब उतना ज्यादा ये नहीं जो बहुत ज्यादा हमको रुला दिया या हमको वाइंट में लेना पड़ा या मेडिसिन लेना पड़े या कुछ डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसा नहीं हुआ। मैं भी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। सबसे कि मैं बहुत खुश हूँ सर, ये मेडिटेशन करके मैं इतनी खुश हूँ, जो मैं 10 साल में जितनी खुश नहीं थी, वो मैं इस मेडिटेशन से सर कितना ज्यादा आपको थैंक्स बोले सर, मेरे पास शब्द नहीं है। तो यही पूछना था सर, एक लास्ट क्वेश्चन, तो ये जो पेन है कितने दिन तक सर ये फॉलो अप रहेगा? Depends on your karma, man. अच्छा अच्छा, ओके। Just don't worry about the karma, don't worry about the pain, just go forward, trust the process, go forward, that's it. अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। Okay, हाँ okay, ओके, thank you. थैंक यू। So yes friends, today Navneet is there with us. Wow. Okay, so I asked क्या her to सरप्राइज Navneet is है। first. Yes. गुड इवनिंग First मैम, गुड इवनिंग। Namaste, Neeta ji. नमस्ते नमस्ते। Namaste to all masters. Lovely to see you and join in group meditation. Yes. So let us continue listening to the sharing. And today Navneet ji will answer your questions. Okay. Thank you, friend. देख नहीं पा रही हूँ इतने। Yes. Okay. यस यस। Rita ji, unmute करके बोलिए।
Good evening, sir. Yes, Sir, madam. I'm following completely diet. जो आप बोल रहे हैं मैं वो सब कुछ फॉलो कर रही हूँ एंड मेरा माइंडफुलनेस बहुत इंक्रीज हुआ है. रियली वेरी हैप्पी. अर्लियर मुझे कुछ फील ही नहीं होता था. एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे रिलेशनशिप इश्यूज हैं और मेरे हार्ट में आई नेवर फेल्ट, मुझे किसी से कुछ फील ही नहीं होता. हार्ट जैसे मुझे लगता है मेरा ब्लॉक है कंप्लीटली. But nowadays, when I sitting in nature, I'm enjoying nature a lot. Seeing at sky, मतलब मेरी my perspective towards life is completely changed. And I was running कि मैं books नहीं read करूँगी. In this 2 days Mona, I kept Mona also, and everybody at my home they were against it कि नहीं ये कैसे होगा, मौन क्यों रखना है. Earlier I told you I practice on Buddha Purnima. लेकिन kids, they were very happy. They were yelling and shouting and screaming in front of me. In spite of that, I did not utter even a single word. And I was, the whole 2 days, I was very calm, very peaceful. And there was a smile on my face. I'll not speak at all, whatever you do. And I'm enjoying my own company. The 2 days I read a lot. एंड अभी खैर आई कांट से कि मुझे उतने एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं जितने लोगों को हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा मेडिटेशन दैट इज वंडरफुल. आज मैंने मॉर्निंग में 2 आवर्स करा है. नीता जी ने एक 5 to 6 का स्टार्ट करा है, वो करा. फिर उसके बाद बुद्ध बनो, आई डिड इन दैट ऑल्सो. और ये अभी वाला भी करा. आज फुल डे मतलब मेरे मेडिटेशन में बहुत एनर्जी थी. आई फेल्ट वेरी गुड. लेकिन आई हैव सर्टेन क्वेश्चन. सैटरडे को जो मैंने मेडिटेशन करा था उस टाइम पे वो 1.5 आवर जो मेरा था, इट वाज वेरी क्रिटिकल. आई वाज नॉट एबल टू सिट एट ऑल, बट आई डिड नॉट ओपन माय आईज. It was like my body was telling me just get up, and there was I was moving hands and legs, but I was not unlocking at all. But ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. माई बॉडी वॉज टेलिंग या माई माइंड वॉज टेलिंग मी कि मुझे ऐसा करना है. मतलब मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ पा रही थी. और सेकंड थिंग, अभी मुझे जैसे जजमेंट्स हो रहे हैं जो भी ना, मैं कर रही हूँ कि इसने ये काम ढंग से नहीं करा या ऐसे करा, तो इट मीन्स कि मैं वो जज कर रही हूँ अपने लिए. दिस इज माई क्वेश्चन. जैसे आपने बोला था ना, जजमेंट कर रही हूँ मैं. Okay, so I think I need a little bit of translation in English. Okay. just the question part. Just the question part. Okay. Yes, madam. You can speak in English. आप English में बात कर सकते हैं. Just the question. I can. Okay, I can. I'll do. Just come to the question. I was judging like I was judging my Mali. I was judging my mates that they are not doing work properly, and I was judging my kids that they are not helping me, and everything I have to do my own. They are just sitting on their beds. During Mona also I have to go to their rooms and I have to serve them, and I am doing till morning to night. But no even a single body comes and help me. This is my question. And is this judgment? That is your reality. That's not judgment. This is my reality. Yes, that is your reality, and you can change the reality if you want. No, I want to change that. Yeah, if you want, you can change. For that, you have to communicate. For that, you have to express. You have to have a clear boundaries. Okay, so this much I'm happy to do, and this much support I need from you. So this clear communication should be there to your partners and to your children. You should not do any work out of stress. Then that has a negative consequences. You see, you like serving your children out of joy, then that is fine. But you are serving your children out of stress, then whatever you are serving, it has a negative energy. So better to have a clear communication, and you can speak to your children like, I can cook, but you have to serve yourself, or you have to support me in cutting the vegetables, whatever you can communicate.
So unless you communicate, they don't know that you are going through the stress. So no, I communicate, but they won't help me at all. that means you are not communicating in the way they understand. Okay. So try to communicate in a way they understand. So practice more meditation, practice more mauna. Naturally, everybody will listen to you. Okay. So this is very important. You have to have your points across. This is a problem for many of the women. That's why women has a lot of hormonal issues, thyroid problems. Very few men go through thyroid problems. A lot of women go through thyroid problems because they don't open up their throat chakra. They don't communicate. So this is the lesson you have to go through. You have to No, when communicate in a way they listen. Can I Okay. speak? Can I Yes. speak? One more question. That day I just asked you one thing ki I have lot of anger in me, right? Yes. You told me in answer, you told that you don't have to respond. You don't have to react, you have to respond. What do you mean by respond? Responding means take your time. Don't react. Don't immediately react. Don't immediately give any kind of reply. Just step back, see the situation, see why you are feeling angry, why you are feeling irritated, go to the root cause, and then how to deal with it appropriately, you deal with it. So it means you are completely aware of your actions. That is responding. Okay. 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 So in reaction, you go tit for tat. So if you go tit for tat, then the relationship become worse. I know. So don't go tit for tat. Step back, analyze your own issues, go for your root cause. What is that which is troubling you? And you communicate in an appropriate way. Whatever you want to communicate, you can communicate without reacting. That is responding. Okay. So one more thing I want to ask. Madam, the rest of the people. Just one more, Okay. please. Okay. Sir, I have relationship issues. Why don't you take a long class on relationship and that 7 mirrors? Please, sir, please. I'm requesting a lot. These seven mirrors are nothing but 7 chakras. I think we have already taken that, and it is available in PMC Pyramid Valley in English. And also, Neetaji is also done that 7 chakras. So the 7 mirrors are nothing but 7 chakras. Okay, anyway, Navneet ji is here. So she will speak about the relationships today. मैं वही कह रही थी कि आज कम से कम रिलेशनशिप वाले इश्यूज के आप क्वेश्चंस पूछिए नवनीत जी। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी, इसीलिए मैं आपको अच्छे से वेलकम नहीं कर पाई। ज्ञान भारत, आप नाम सुन रहे हैं ना नवनीत जी? ये ध्यान छत्तीसगढ़ था। ध्यान छत्तीसगढ़ से प्रदीप सर ने इसका नाम चेंज करने के लिए कहा कि you should change the name. And when I asked Patri sir gave me this name, Gyan Bharat. So this name has given me by my my gurus. One is Patri sir and second is my Pradeep sir. So this, how do you feel that after hearing this name, Gyan Bharat? Gyan is matlab wisdom. World of knowledge. Yeah, means wisdom. Wisdom. Yes. Wisdom. Okay. So world of wisdom. Absolutely. Very beautiful name. Full of truth. Yes. Thank you. Community of truth. Yes. All seekers of truth come together. Yes. So we are very happy after receiving this name because we have more responsibility to justify this. And Pradeep sir is along with us. I know. आप भी आते रहेंगे. So please share some relationship tips.
Okay, relationships. I'm not guru on relationships, but only one tip I will give: non-interference. Yes, yes. Yeah, our dear Master Brahmarshi Patriji has also shared non-interference. In any relationship, there should be non-interference. So I was listening, Madam is sharing about how living in the house, you feel if people in the house are not listening to me, it's okay. We do what we need to do. We don't interfere. Others, what they feel like doing, we let them do. And this is also my experience. If I interfere, others around me are not happy. But if I feel I need help from others, then that means I need to be kind to myself. Something is, inner voice is saying, oh, you're not doing enough. How come I have to do all the work? So this voice comes from the mind. It comes from our childhood. Somebody in our childhood also used to scold us. So now we are scolding ourselves. Why you are not doing enough? Why you have to do all the work? Why nobody is helping you? So in our childhood, somebody in our family must have scolded us. So now this voice in the head has become part of us. So always this voice will come. So we have to be kind to ourselves. That time we have to sit down, take a break, and just be kind to ourselves, have a coffee, enjoy the time alone. And don't interfere in others. Others don't want to help, it's okay. We are still masters, right? We can do what we need to do, we can do for ourselves. But at that time, when you have a voice in your head telling you why you are, like a victim personality or some voice criticizing you, the time you need to sit down, be kind to yourself. Because this voice is coming not now, it's coming from childhood. Somebody in your family, when you were a child, used to do this way to you. Now you are doing this way to yourself here. So that time we have to just relax, be kind to the self. So we cannot blame. So in spirituality, we don't blame others. Oh, why my family doesn't help me? Why my husband is not doing for me? So when we understand this voice, it came from my childhood. It's not real. It's an illusion. It's just Maya. So we just sit down, relax, be kind to the self. Once you become more and more practicing kindness to yourself, this voice will go away. Because I also used to have this voice. I have also mother and father used to say, you do this, I karna, aise karna. So as after coming into spirituality, I practice kindness to myself. And then slowly the voice, now it doesn't come. Or if it comes, I don't follow. It doesn't affect me. It's there, but it's not affecting me. You see, if you listen to this voice, it affects you. You feel like a victim, you feel small. So we don't interfere in others, recognize ourselves. We always have voices in the head which come from our childhood. They are not real, they are not us. So we don't need to pay attention. That time you need to be kind to yourself, be with the breath, give yourself a break. The life continues. So this is what I would say. Non-interference in the relationship. We take responsibility for everything. This is what I've learned. My biggest lesson. Thank you, नवनीत जी, बहुत सुंदर आंसर दिया. सर मैं ट्रांसलेट कर दूं इनको कि मैं सबसे लास्ट में करूं, आप जैसा बोलिए. Yes, we do it towards the end, madam. It will be good. So when it comes to relationships now, you see, you ask any question regarding the spirituality or any question regarding spiritual concepts or truth, my answer and Navneet's answer will be same. But if you ask relationship issues, both our answers will be polar opposites. That is the beauty of relationship. Okay. So what I would say is, it's never ending. Like you cannot have a book on relationships. It's not possible. If that is possible, then Buddha would have written that first book. It's not possible. It's not possible that there is guidelines for this relationship. No, it's not possible. But one thing is for sure, your relationships are your mirror reflection. Okay. This is the point you have to remember. All your relationships are your mirror reflection. You have to, instead of pointing the blames, you have to take responsibility
and start working on it. And communication is very, very important. Generally, the women feel a lot, but they don't communicate. They speak in the chat, like a chatterbox, they speak, but very less essence of communication. That is a problem with most of the women. So instead of speaking, you communicate. There is a difference between speaking and communicating. So communication is a two-way, right? So you make sure you reaches your point to your partner. So as long as you have communication, then the relationship is beautiful. I mean, I told you many times that I also go through a lot of relationship issues, but it's only the communication which helps us. You know, you stop blaming and you take responsibility for yourself. Start communicating. Then all the problems gets resolved very naturally. That is very important. So this is a broad framework, and if you can see your relationship as a growth engine, then you will never complain. Everybody should see the relationship as a possibility of growth. The most complicated relationships also helps you to grow. Okay. So that's all, madam. All questions regarding relationships are finished. अभी तो और होंगे. आरती को अनम्यूट करूं कि मीटू को? Yes, आरती जी. हाँ आरती जी. नमस्ते नवनीत मैम सर, बहुत अच्छा लगा आज नवनीत मैम को यहाँ देख के. हम बहुत अच्छा, आप सरप्राइज बड़े बढ़िया बढ़िया देते हो हमको. बड़ा अच्छा लगता है हमको. सर एक बात पूछनी थी कि मेरे को 10-12 साल से प्राणायाम करने की आदत है, तो जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, you have to remember to speak slow. सॉरी ऐसा बात किया तो कैसे समझ सकते हैं मैडम? हम थोड़ा आराम से बात करें. सॉरी. मैं पहले सोची थी यही कि आज आपसे बोलूंगी कि सर मैं धीरे बोलूंगी, पर बात करते तो एक्साइटेड होकर वापस ये लाइन ही बोलना भूल गई. तो मैं सर ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे 10-15 साल से प्राणायाम करने की आदत है, तो जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो मेरा बॉडी, माइंड और ब्रेन सब अलर्ट हो जाते हैं और लंबा यानी लॉन्ग ब्रीथ होता है मुझसे. तो वो वैसे ही चलने दूं या उसको फोर्सफुली में? और नेचुरल ब्रीथ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा नेचुरल ब्रीथ कैसा है. If you don't force, that is your natural breath. ओके सर. और सर क्या लाइट लैंग्वेज में प्राणायाम करना ज्यादा, मेडिटेशन करना ज्यादा पावरफुल होता है? लाइट लैंग्वेज में मेडिटेशन नहीं, हाँ वो जो एक कुछ क्लास कहीं हो रहा है पता नहीं, तो उसमें करना क्या ज्यादा पावरफुल होता है? हाँ मैडम, ज्यादा पावरफुल होता है. आप एनलाइटन हो जाते हैं. ओके सर. In light language you have more energy. In half an hour you can go to Shambhala and come back. In 1 hour you can go to Galactic Council and come back, and you will become a very special person, and you will become a superhuman, and you can go to starships also. All these things are possible. You please meditate. You continue meditating with light language. अच्छा सर. और एक मैंने किसी मास्टर से, and I forgot, your DNA also will be activated very soon. Your 12-strand DNA will be activated, and you will also get channeling messages. Some astral master will say, today is a very special day, you do 24 hours meditation. And some other astral master will say, next week is a very special day, you do 12 hours meditation. Like all this kind of guidance you will directly receive from galactic masters through light language. Okay, sir. So everybody should do light language meditation. Anapanasati is only for beginners. Anapanasati is only for babies. Light language is for advanced people. सर मैं तो बेबी हूँ, पर अभी मुझे तो महीना भर ही हुआ है जन्म लेके मेडिटेशन में. No, I'm telling you, Anapanasati is just for beginners. Advanced is light language. Okay, okay, sir. सर और एक मास्टर से मैंने ये भी सुना है कि वो रात भर जगते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो क्या ये सही भी होता है? मतलब वो सोते ही नहीं है दिन भर में 24 आवर्स में? You please practice light language and you answer me this question. Okay, sir. Okay, sir. सर ये आंसर मुझे समझ में नहीं आया. She got the answer, madam. Aarti ji got the answer. नहीं, नीता जी को नहीं समझ में आया तो शायद मेरी समझ में भी कमी आया है ना. मैं तो बहुत ही नई हूँ इसमें. आप वापस समझा दीजिए सर.
हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। Hear me? Can you hear? Yeah. Yes. So Neetaji, you please translate this, because I know this Chhattisgarh group and this Gyan Bharat is so innocent. Whatever I say, they blindly believe it. I don't know what they are understanding. So you better clarify. इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इन लोग जो इनोसेंट है वो बिल्कुल फॉलो करेंगे आपको, वो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं आपको। तो प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बताइए, क्योंकि कल परसों मुझे भी एक मैसेज आया था, पूरे ग्रुप्स में चल रहा था कि 24 आवर्स आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि किसी मास्टर को ये चैनलिंग मैसेज मिला है कि ये 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मना नहीं करी सर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस को मैं मना करूंगी, तो मैं जस्ट विटनेसिंग कर रही थी। फिर अभी आपने कहा और लाइट लैंग्वेज का, तो प्लीज आप ही उनको डायरेक्ट बोलिए, नहीं तो उन लोग फॉलो करने लग जाएंगे। Okay, so I think I have discussed about it in the beginning, yes, right? Sir. Yes. Yes. See, light language is a language of communication. You know, like you speak Bhojpuri, Marathi, Hindi, English, you know, Tamil. Like this language is for communication, right? So similarly, light language is just another language of communication. And normally the beings from the other dimension, they use this language for communication. Very simple. And some people on the planet Earth, they speak light language, and that is their gift. And that's all. It's just a communication. And just because you meditate with light language, it doesn't mean anything. What is meditation? Meditation means you emptying the mind. And you don't need anything for meditation. You need to just be with the breath. That's all. So just because you attend some workshops or seminars with light language, you feel little bit energy. Yes, you might feel little bit energy. There is a possibility you might feel energy. Just like that, you go inside a pyramid, you feel energy. You know, you go to the nature, you might feel energy. Similarly, in some light languages, you might feel energy, but it is just your personal feeling. But there should be no dependency. Right? There should be no dependency whatsoever on anything. You should be only following your natural breath. Then only you become a real master. Apo Deepo Bhava. Only you can help yourself. No light language will help you. Only you can help yourself. No astral master will help you. No spirit guide will help you. You have to help yourself. Yes, when you are in the process of helping yourself, sometimes very naturally, the people from the other dimension, the beings from the other dimension, they might come and support you, right? They might come and support your process. That happens. But you don't need to ask for it. You don't need to make any special attempts, or you don't need to join any classes or anything. Just do your meditation. That is the truth. What does the 18 guiding principles say? Is there in the 18 guiding principles of PSSM, does it say that you follow the light language? No, right? So the answer is very clear. Patri, did you see Patri sir ever speaking light language? नहीं सर, कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया। ये बुद्ध बनो प्रोग्राम जो सवेरे मॉर्निंग में आता है ना, उसमें कोई मास्टर आए थे, सुषमा सराफ करके, उन्होंने बोला था। No, it's okay. Don't mention the names. I know what is happening. I know what is happening. So do simple experiment. Do simple experiment. You see, I have very good friends who speak light language, right? So I know what light language is. So don't be dependent. Don't be dependent on any light language. Be dependent on your own self-mastery. That is very, very important. And I would say just do an experiment if you really want, because I have done all my experiments. I have done all my experiments with light language, without light language, meditation with light language, meditation without light language. I have done every kind of experiments I have done. Maybe I will share some stories, you will understand. Okay, so once I was having a very severe headache. And there was one of my friends who has the gift of light language. So that friend saw me and said, "Oh, you are having a headache." I said, "Yeah, can you see?"
She said, yes, I can see your Sahasrara is little bit, energy is blocked, I can see. So she herself volunteered and she said, oh, there is some block. Then she only said, I can remove it if you want. Then I felt, you can remove my headache? Okay, remove it. So then she spoke some light language and the headache is gone. Okay. So she spoke some light language and the headache is gone. I felt like, wow, kya jadoo yaar. I'm so lucky to have a friend like you. So whenever I have headache, without me knowing, you will only see and you will only heal me. So whatever. So I felt so great about it. And so we went out for shopping and all those things. And then again, the same headache started in the night, in the middle of the night. So then I was like, what to do? Again, the same headache. I thought she took away the headache. Then again, the headache came. So it was not, then I noticed that, these people who have this gift of healing and all the things, they can do only temporary, but it is not a permanent thing. So then what I did, I sat in my chair again, then I started meditating, then the headache went permanently. So, but this looks very fancy and this looks fantastic. You get a message from Galactic Council, you get a message from Astral Masters that yes, you have to meditate for the next 24 hours. I mean, don't reject it, but you have to use a little bit of common sense. It is good to meditate every day. Why only particular day? It is good to meditate 24/7, 365 days a day. Right? Why one particular day? So so you have to always use your common sense. Does it really make sense or not? And you get all the answers from within. Truth is very simple. Use your common sense. Do you need a guidance from an astral master for your evolution, or you need a guidance from your heart? Which one you need? Ask yourself this question. You need the guidance from your own heart, or you need the guidance from XYZ from outside? Own heart, sir. So then you got the answer. So if you ask me the question, sir, then I should not follow any channeling messages. You should never follow any channeling message. Make it as a statement. Never follow any channeling message. Always listen the channeling message, but you follow your heart. You should never follow any master. Don't follow any master. Don't follow any channeling. Always follow your heart. Listen to every master, listen to every channeling message, but follow only what your heart is. Okay, so this is the solution for everything. This is the solution for angels. This is the solution for astral masters. This is the solution for Galactic Council. This is the solution for every XYZ. This is the only solution. Sabka sunna, listen to everybody, but always follow your heart. Don't blindly follow outside. Always follow what is inside. That is very, very important. Okay, sir. तो सर जैसे ये ग्रुप में ये मैसेज डाल रहे थे, तो मैं कैसे मना करूं? आप बताइए सर. आप मुझे बोलते हो कि सेवियर को ना छोड़ दो. अब मैं मना भी नहीं कर पा रही थी, पर मैं 2 दिन से देख रही थी मैसेज को. तो should I ask them? See what happens. Maybe I want Navneet to answer. Well, Navneet, you take it forward from your perspective. Let us listen the feminine aspect. Navneet ji, should I ask you stop all these messages which is shared in the groups? I know that it is not, they are not authentic, but how can I ask them, please don't share it? Because Pradeep sir told me, don't be severe, just witness everything. Like you, I also received this message. Yes, Ekadashi. 6th of June. है ना? 6th Yes. of June, मुझे भी मिला. Yes. And what I did, the person who sent, I said, you please delete it. Achha, you asked him. I said, you delete it. I don't agree with this message. So I used my discernment, because you are leading a group. You are the leader for the group. So you have to use your wisdom. But Pradeep sir, right? Pradeep sir said to me that Neeta, savior banna chodo.
don't be a savior, only just witnessing. If anything, क्योंकि उसमें एक ग्रैंड मास्टर का नाम लिखा हुआ था, हाँ, yes, है ना? So every group में वो शेयर हुआ, हर ग्रुप में, और लोग पूछ रहे हैं कब है. Okay, next time I will. नेताजी कल गुजरात गुजरात में 2 घंटे का एडिशनल मेडिटेशन भी हुआ है इस बात के ऊपर. हाँ, तो मैं तो कभी नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर आप लोग ग्रुप में ऐसे मैसेज डालते हो तो मैं मैंने नहीं डाला. जिसने भी डाला है, मैं बहुत हेल्पलेस हो जाती हूँ, क्योंकि मैं प्रदीप सर को इतने अच्छे से सुन रही हूँ, समझ रही हूँ हर चीज को. तो आप लोग भी समझिए, आप लोग इंटरेस्ट मत लीजिए उसमें. जी ठीक है. Okay, दो लाइन आपके बारे में बोलना है मुझे, और ध्यान छत्तीसगढ़ टीम की ओर से. आया है कोरोना मेरी जिंदगी में. आरती जी, just sorry to interrupt. Okay, you can speak little later. See, I just want to share the overall understanding. Okay, everybody has good intentions. We have to understand everybody has good intentions. Whether somebody is doing angelic workshop, or somebody is doing DNA workshop, somebody is doing light language, somebody is doing healing, somebody is doing Reiki. Everybody has good intentions that they have to help the people. Okay, so the intentions are always good. But whether is that what you need it or not, only you have to decide. So instead of criticizing or judging others, it is better you always focus on what is that you want. Okay, so when you are absolutely clear what is that you want, then that becomes your guiding force. And there is nothing harm in experimenting. So always always have a scientific temper, always experiment. If somebody is saying something, just experiment and find out what benefits you get. Anyway, you have a reference point, you do anapanasati, you are a meditator, so you have a reference point. So always compare, do experiments, and you decide for your own self. And Neetaji, for your question, that these kind of messages are coming in the group, what should I do? You feel whatever is good for you, you do it. And if you think you are a savior, you have to make sure that these kind of messages are not going through. Then there is some advantage and there is some disadvantage also. So the disadvantage is, when will the people learn not to get attracted to these things? Because you keep on saving them, one day they will go and they feel like they are missing out something. So I think if you are having a small group, on a private, if you're having a small group on a private, you can share your opinions. But on a larger group, you leave it to the people, let them experiment and see what they want, right? And yesterday I heard something that there is also aura cleansing workshops happening. I was like very fascinated. I was like, okay, I heard of car wash, now it's aura wash is happening. So, in foreign countries, there is a car wash. They drive the car and it washes in 2 minutes and the car drives away. So now there is aura wash. You go to a particular meditation, close your eyes and sit, the aura gets washed. So, see, these new things, again, they don't have any bad intentions. You please understand, they don't have any bad intentions. But it is just a new name, Everybody says anapanasati, everybody says close your eyes, observe the breath. It is a little boring, You need, if you just eat ice cream, it is very boring. You need some toppings like cherries, and you need some toppings, like you need some marketing, you need some advertisements. So you have to take it in a positive way, okay? Not to worry about it and not to be serious about it. Just take it in a happy way. Everything is for good. In the bigger picture, everything is for good. Okay, madam? Okay, sir. Got it. Yes. All right. So now, from now on, all the questions for the next half an hour, all the questions for Navneet ji. Okay. Yes, Navneet ji. रुपिंदर जी, देखिए आप लोग बिल्कुल नवनीत जी से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. हेलो, नमस्ते जी.
Namaste. And Madam. I'm speaking from USA. My name is Rupinder Kaur, and I'm speaking first time in this group. And my experience is very good with Pradeep sir. But I was, my story is very long, but I'm going to speak little bit. I was sick back in 2017 when I went to India after 25 years. And over there, my right side is numb, but doctor says I have problem in my spine, and due to some jerks over there, and I have that problem. And then I come back here and go through the doctors, and they give me very strong medicines, but I quit that medicines. And then after that, I went to Kerala to go to oil therapy, but it doesn't help me. And after that, uh, I am from Sikh family, and I do my Simran Vaheguru, wake up 4 o'clock to 6 every day morning, and 1 hour in evening. But it helped me little bit. And like 3 months, I joined this Anapansati. But one, it's like when first day when Pradeep sir start that retreat, I heard on the YouTube, and I joined YouTube. But when they start second retreat, and then I start on Zoom. But my problem is I always take one meal a day, and supper is very light, like a fruit or salad. But a retreat, I cannot follow that. It's on and off, on and off. I tried to do this, but my kids said because of my health, they said, "Mom, don't go there because you will be very weak." Because of whenever we lose weight, first our face lose weight and then goes down. But they are very worried. I have 3 kids. One, my daughter, she live in Germany, and one, my daughter live with me and my son also. And my question is, do I cure with this Anapansati? Because right now I am okay. My leg is a little bit numb, but my arm and speech is better. So my question is, Yes. like Pradeep sir said, if we take like this raw food and like liquid food, do it help us? So Pradeep, yeah, because we do this in the retreat. So now we are doing a light food so that the body is light. When we do meditation, we don't feel heavy. We can go deep in meditation. So that's why in the retreat, there is eating light, raw foods and light food. I won't comment so much on the food, but Madam, you have become full vegetarian. I just want to ask. Yes, I'm since childhood I'm vegetarian. Acha, And when I came here in USA, that time I have a job in traveling, and when we go to the very far, like there is no, they don't know vegetarian. So that time I took a couple of time, not much. But since 8 years, then I quit. I said I have to
quit this. So now totally vegetarian, no garlic, no meat, nothing. No eggs, nothing. No egg biscuit. Good, very good, Yeah. madam. So all diseases, whatever sickness we are having, is because of Mhm. energy block. See, we are energy beings. Okay. We are energy beings. We are Mhm. having a body. Mhm. It's our job to take care of the body. As a soul, we Yeah. are having a body, so we must take care of the body. So whatever disease has come is because of actions we have done. This life, we are already vegetarian, but we don't know past lives. Past life, yes. Yeah. Eating was there, killing, violence, all this was there. So always we have to pay back. So diseases come to as energy blockages, as negative karma. Any negative karma we have to pay back. So the meditation helps. What you do in this retreat, 1 hour, when you sit 1 hour meditation, you are getting 1 hour cosmic energy. So this cosmic energy goes through your etheric body, and then it cleanses. Where you are having numbness, it will cleanse. As you do more and more meditation, then you find that the etheric body, all the blockages get cleared. Okay. Blockages are there. That's why you are having numbness, pain, disease. So when the blockages get cleared, then the diseases go away. So spiritual health is the root, physical health is the fruit. So on right path only, madam. Okay. And one more thing, whenever I sit like long hours, 2-3 hours straightway in meditation, my head from here is like somebody pulling from this and very heavy. Like I feel my neck is very weak and my head is very heavy. I cannot bear that weight. So yeah, because of is energy, that because of you have come into meditation. Few months now, few months you have come into meditation. So yeah, your 3 body, months only. 3 months. Yeah. So these 3 months, your body is getting used to this feeling of energy. Now you are starting to feel energy. So we feel energy like the head becomes heavy. Sometimes head will fall forward, or some people feel like there's a pulling sensation. Yeah, if I fall forward, like all day, my neck pain. Yeah, so cleansing is happening. So when you feel energy, you feel it in your body as heaviness or pain. When pain comes, it's because energy is working. Wherever there's an energy block, energy is coming and cleansing the space in your energy body. So all cleansing is happening. Good things are happening. You just continue. No medicine required for anything. So I don't take any medicine because when I came here in like after my sickness, when I came back to home and doctor gave me medicine, all day I sleep, all day. And then my daughter, she said, don't mom, quit all medicines. Otherwise you, because I, I speak very loud now. My all family is sleeping because of right now here is 4:30. So, so that's why Rupinder ji. yeah, that's why I am not talking this time because of my family. So Thank you. now Thank you. today I Thank have you. to speak because my head is very much because of heavy, energy. so. Because of energy only. Yeah. Okay. Doing well, madam. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. And I have one more confusion. What is difference in between soul and spirit? Soul. Okay. Soul and So spirit. okay, different authors use the word differently, but soul is a speck of us. Yes. Spirit. That I know that we are are light soul. and We are soul. we are So soul. in Christ says Holy Spirit. So I assume you are referring to that. Holy Spirit, Father and Son. So Spirit is consciousness, God everywhere, the Creator. So some people use Spirit as instead of saying Creator, existence, God, consciousness. So they say Spirit. Spirit can also be used. So we are soul, and we are part of all that is. We are part of God. We are part of Spirit. Yeah. Because I have experience. मेरे यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते, मैं सेशन के शुरू में भी बोली थी कि आप जो ये एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, सर दुखना, पैर दुखना, आप बार बार उससे अपना टाइम दूसरों का भी जाहिर मत करिए और अपनी जर्नी को आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए। नवनीत जी आई हैं, उनसे जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट कर पाए वो अच्छा है। तो क्वेश्चंस 1-2 लाइन में पूछिए, पूरे आप अपने जर्नी को मत बताइए, ठीक है फ्रेंड्स? इससे टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। हाँ जंगल जी, जंगल। नमस्ते मास्टर। नमस्ते, नमस्ते सर। Namaste, Neeta Master. Namaste, Navneet Master. Namaste, Pradeep Master. I just want to share briefly the experiences that we had in this weekend session. I followed very clearly the time plan for the liquid food, because we have to remind ourselves every 2 hours up to morning 6:15 to evening 8 o'clock. Then in between water. I think that really worked with the mauna. And meditation also tremendously, the effect of meditation was very deep, very calm, very quiet. And I had to start reading the book, that is the Soul Journey, Peter Richelieu. Then reading also really, the understanding, the speed of the reading, and that was also, I find, is extremely, good. That was one. Then emotions in this, then we 2-3 emotions in the deeper level, which I never noticed, and it came to the surface. Then we started looking at, oh yeah, this I have to do something. Then I realized, okay, I start slowly working on it, and I also find that how a solution that, okay, how I could come out of this, emotions, and quite calm, and especially when we are doing mindfulness, then what I did a kind of systematic way of looking at. Whenever do any housework, look at mindfulness, look at like any personal work. When you are observing things, a lot of thoughts keep coming in. Then we have to really say, yeah, whether this thought is correct or whether this thought is something come from somewhere else, or it's my own or something like that. Also, we start looking at it. Therefore, while walking, while reading, this mindfulness was very helpful. Thank you so much for this 2 days, especially Mauna was very, very useful. And it helps holistically, it's not only for one part. Holistically, my own person, my own meditation, my own mindfulness, and all those things, it's very comprehensively helped and goes into a deeper level of meditation. That's what I found. It was really wonderful. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Pradeep sir, for a wonderful. Thank you, sir. Thanks for sharing your great inspiration. At this age, you can follow and be an inspiration. Yes. No, Thank you very much. First time I not left a single hard food, master. Fully liquid. Every 2 hours, I pre-planned it. See, we have to do a preparation. What I have to take every 2 hours. In between, as you always say that I have water if you feel. Then only once I had. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. Very beautiful experience. Yes. Thank you. And so, friends, we have very limited time, and I know Neeta ji also has to do the translation. So let us go very quick. Be precise and short. And if you have any specific question, you please ask Navneet. Yes. Or else, if you have a general question or general sharing, just be quick. Yes, Manisha ji. Sir, I have been seeking this from past 20 years, but today I would like to say, after the Mona experience, it was like Helen Keller feeling the rain, how she felt the rain drop in her hand. Exactly the same way I felt. The emotions started coming up on surface. I cried a lot. I cried. It was like a baby crying. And all the emotions surfaced. And more introspection came into my mind, and more intuitive also I became. Like, for instance, we have in our health, there is a definition of health. Health is physical, mental, emotional, and spiritual well-being of an individual. The spiritual aspect, spiritual faculty was missing. And that I
think that is what is missing these days, and that is why the trouble more is happening. And about material attachment, you said, sir. Material attachment, I'm doing decluttering, and I disposed of many things, but somehow I felt I was like a snake sitting on all those possessions, and it was very difficult for me to. It was very difficult. This attachment thing was very difficult, and I couldn't. But I did. I did declutter. I did very well, nicely. And one more thing, and one more experience, sir, I would like to share. During eating a mango, I was witnessing it, how I'm eating. So I felt gratitude towards the tree which has sent me this mango, and even to the farmer who has taken care of the tree. And sir, I felt very, it came down like that he must be standing in the scorching sun and producing such a crop for us. And I felt deep gratitude towards the farmer. And that's Great, all. madam. Thank you. Congratulations for throwing the things out. Please continue. Yes. Next, Mitu. सर नमस्कार। नमस्कार पहले मैडम। भी मैंने 9 दिन का मौन किया हुआ है, लेकिन ये 2 दिन का मौन, उसमें रात दिन का डिफरेंस लगा। वो 9 दिन किया तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये 2 दिन का जो मैंने मौन किया उसमें जो मुझे लगा था ऑप्शनल करना, है कंपल्सरी हो गया मेरे लिए करना। जैसे आपने नहाने बोला था, तो शाम होते होते ऐसा सर भारी हो जाता था और आंखें पूरी एकदम हैवीनेस आ जाती थी कि मुझे नहाना बहुत कंपल्सरी, मतलब मुझे नहाना ही नहाना है, नहीं अवॉइड करते हुए भी नहीं नहाना, बारिश हो गई तो भी नहाना है मुझे, ऐसा। और उसके बाद दूसरी बात, आपने मेडिटेशन ज्यादा करने बोला था, तो मैं आपके सेशन में मैं करती थी 1.5 आवर का, और एक नाइट में करती थी रेखा पोदार का। तो फिर उसके बाद में रात को जब मैं सोती थी, सोई में तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और फिर उसके बाद में जब सोती हूँ तो 2 मिनट आंख लगती है, फिर से उठ जाती हूँ, फिर 2 मिनट आंख लगती, फिर मैं 1 घंटे का मेडिटेशन करी तो इमीडिएट मुझे नींद आ गई। मुझे कोई बोल रहा है जैसे मेडिटेशन करो, तो मैं 2-3 दिन लगातार मैंने मेडिटेशन मेरे को करना पड़ा। और तीसरा चीज आपने बोला था वॉकिंग करना और कुछ एक्सरसाइज करना, तो भी नीचे घर पे एकदम सफोकेशन हो जा रहा था, मुझे ऊपर जाना कंपल्सरी हो गया मेरे लिए। विदाउट गए मेरे को ये नहीं लग रहा था कि ना ऐसा। और फिर तो मैं मौन तो बहुत अच्छे से किए, और जो आपने बोला था करने तो फॉलो कर पाई। थैंक यू सो मच। Yes, madam. Thank you very much. Yes. Next, Sweta. Yes, sir. Namaskar, sir. Can you hear me, sir? Yes, yes, madam. Please go ahead. Okay. Sir, my question is this, that I am very much in dilemma ki if the soul is planning everything before birth, like, so why the people kill a lot of people? There are people who are coming on this earth to kill people. They plan it before their birth that I'm going to just execute some murder is there in the earth. Okay. All questions to Navneet. My question, is this: that the people, those who kill other people, are they going to plan it? Yeah, everything is planned. The person who rapes somebody, the person who kills somebody, the person who robs, the person who blesses, all these are planned. It's planned before life, like A will kill B, or B will rob B, or A will rape B. So everything is planned, and everything in the scheme of things is fair. Because in the past life, B must have killed A. So in this life, A kills B. So everything is planned and everything is fair. There's no injustice. Is this your what you asked? Like Hitler killed a lot of people. Yeah. So did they plan that I'm going to kill so many people? Yes. It was dark ages. That was during the dark ages of the earth. So there was darkness everywhere. So all the souls that came and volunteered to be part of the darkness.
The souls know they are going to Isn't be it part true of that we are darkness. But now light is coming, we will go into the light age, right? The earth moves in cycles. So we have the dark age, and then we have the light, we are going into the light. So everything is fair. There's no injustice. But ma'am, when the soul is Okay, very madam, positive condition madam, when they plan everything. Sweta ji, aap, Very big subject. Yeah. okay, so as told you in the beginning, there are some questions which are good, which helps in your evolution. Okay, but there are questions which doesn't help you, but simply out of your curiosity you ask sometimes. See, the questions which comes out of your curiosity, you should read a lot of books. Yeah. Okay, so in this question answer time, you should be very precise and just get to the straight to the point. Everything in the whole of the creation, there is no injustice whatsoever. Okay, so everything happens for a reason. If you want to understand what is the reason, you have to read a lot of books, you have to do a lot of meditation. Okay, so please read more books, then you will understand. Next question. Sir, every day we share some soul journey books, past life between lives. So many books we shared in the book. So next, Sarita Kumari, please unmute and speak. हेलो हाँ बोलिए बोलिए मैडम। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करने से पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, लेकिन मेरी बहन ने आपका लिंक दिया और जब से मैंने मेडिटेशन किया थोड़े से मैं मतलब हमको अपने सारे आंसर, बच्चों से मेरा थोड़ा सा रिलेशन ये हो रहा था, खराब हो रहा था, तो फिर मैंने मेडिटेशन के थ्रू मैंने रिलेशन को समझा, फिर मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे बहुत समझ आया। और द सोल ऑफ जर्नी मतलब एक आत्मा की कथा मैं पढ़ रही हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे क्यों होता है। तो थैंक फॉर दिस, और मैं आगे आपका मेडिटेशन कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मतलब धन्यवाद कहने के लिए बहुत दिन से ये कर रही थी, तो थैंक यू सर फॉर दिस। मुझे मतलब मेरे बच्चों से रिलेशन सही करने के लिए मेडिटेशन के थ्रू। Okay, madam. Thank you. Yes. All right. So next, Riddhi, please unmute and speak. Yes, Sir, go ahead, madam. You can speak. Yes, audible. Go ahead. Sir, on Friday you taught us ego. So, sir, can you please explain the role of ego in a relationship? Like sometimes very much ego leads to destruction of a relationship. So, is ego good in those times, sir, or how should we control it? Sir, Okay. can you give some light on this? Navneet, ego in the relationships. Okay, so ego is a feeling, right? It's the feeling that you attach to your self-image. So in the relationship, the two people, they attach this image, then one is the husband and one is the wife. So the husband feels, okay, I'm the husband and I should do this, this, this. And the wife feels, okay, I'm the wife, I should do this, this, this. And for each other, they feel, okay, he's my husband, so he should do this, this, this for me. And the husband will feel, she's my wife, so she should do this, this, this for me. So this ego, it plays up in the relationship when both husband and wife, they put themselves in the roles. But if you take away the roles, the two people, they are just friends, right? If you are just friends, then you just do as friends. You keep the friendship alive, and then you don't bring the ego in. So ego exists not just in husband-wife relationship, it's everywhere. It's in the workplace, it's everywhere. So as we do more and more meditation, we become aware of these feelings that we attach to our roles, right? Everybody plays a role. A mother has a role to play, a wife has a role to play, but ego is the feeling that you attach to your role. So you might feel, oh, I'm a very good wife, I'm doing this, this, this. So this feeling should not be there.
the feeling that you attach to the role that you play, right? This is ego. So if you don't have that feeling, you just do what you need to do, you be what you need to be, then this feeling doesn't exist in any relationship. Then you just be as friends and you just do things out of joy. And then there's no ego clashes. But when there are fights, no, the husband tries to prove that he is right and wife tries to prove that she is right. So in that case, like how can this topic be resolved, ma'am? Okay, Riddhi ji, all these personal questions, I leave it to you. Your meditation only will solve all your questions, because I solve all my answers I got from my meditation, and all these personal questions you can only receive the answers in your meditation. But as long as you are doing meditation, you are aware of yourself. That's good. You are on the right path, right? Everything that comes, we just need to be aware. As Pradeep ji said just now, you don't need to react, just respond, and you are fine, right? So everybody goes through. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. So next question. अलका जी को पूछो. Okay. Who is the next? आदि श्री वो अलका है. हाँ सर मैम. सर मैं अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. 31 मई को मैंने फील किया है कि जो प्रोसेस में मैं स्टक थी लास्ट 2-3 ईयर से वो कंप्लीट हो गई है. एंड एज यू सेड you have direct connection with God, so I felt that yes, I have direct connection with God, and I am on auto mode. Everything is going on flow. That's all, sir. And कुछ experience है तो I don't think यहाँ share करना चाहिए. तो अगर आप मैसेज परमिशन देंगे तो I will message you. Okay, so you enjoyed, so you realized you have a direct connection a lot, with God. Yes, that is very important. Yeah, that is a very nice feeling, that you are not dependent on anybody. Very nice. Yes. Yes, great, sir. madam. Definitely. I saw aura of myself. I saw aura of plants. Yes, sir. Wow. Good. You have become a master. Yes, sir. I feel I am master now. Okay. Good. Thank you. Yes. So next, आरती जी आपका कुछ पूछना है क्या? कितना तो पूछना है. हाँ सर, तब बात कम अधूरी रह गई थी. कुछ लाइनें लिखी थी आपके ऊपर जो बोलना था मुझे, बस, और कुछ नहीं. और वो एक बात समझ में आ गई आपसे कि जितना हम बुक रीड करेंगे कोई सवाल पूछने का बचेगा ही नहीं. आप जल्दी बताइए वो 2 लाइन. हाँ. आया है कोरोना मेरी जिंदगी में वरदान बनकर, जो लाया है प्रदीप सर को हमारा दोस्त बनाकर. इतना सहज सरल और सादगी भरा है इनका जीवन कि जिसे देख हम सबको होता है बड़ा अचंबा. मेडिटेशन, सर सब उल्टा सुल्टा हो गया है. इन्होंने सिखाया है हमें जीवन जीने का सही ढंग. मेडिटेशन कर अब हम भी रहेंगे अपने ही में मगन. और सर मुझे ये पूछना था कि जो हम बहुत कुछ लिखा है सर, पर अब टाइम नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी. कुछ मेरे को उल्टा सुल्टा भी लिखा हुआ हो गया सब जल्दी में. मुझे ये पूछना था कि सर जो आज मैं सिर्फ नारियल पानी पे हूँ, कल मैंने सिर्फ 2 बार हनी लाइम जूस लिया था और मैं हनी बिल्कुल नहीं पसंद करती. तो ये सब सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है सर? I think नीता जी will answer. बिल्कुल, सर ने कहा है ना, खाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कॉस्मिक एनर्जी हमको जो रोज मिल रही है, प्राणा एनर्जी. तो उसी से ही आप चल रहे हैं. बहुत सारे मास्टर्स हैं जैसे जाशमुहीन वगैरह हैं, वो तो खाना भी नहीं खाती हैं. नहीं, तो मेरा ये बोलना है कि मेरा कोई है ना, मैं ट्रांस में वगैरह नहीं जाती हूँ. मेरे नहीं, फिर भी आपके पास कॉस्मिक. हाँ, थॉटलेस भी नहीं होती हूँ मैं, पर जिद करके मैं जरूर 2 घंटे 3 घंटे प्राणायाम करती हूँ. अभी तो 5-5 6-6 घंटे में से पॉसिबल हो रहा है. बाकी मैं ऐसी ट्रांस में नहीं जा रही, मन भी खाली नहीं हो रहा है. फिर भी आप ले रहे ना एक ना एक दिन मेरा मन खाली होगा ना. बिल्कुल होगा. क्यों सर को तंग कर रहे हो? बिल्कुल होगा.
सर Okay, madam. Thank you. सर Thanks आई for the लव यू, point. आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू सर. आपने बहुत सही तरीका हमको बताया है सर, हम आपको हर Yes. जगह फॉलो करेंगे. Yes. So you have to also respect yourself. You have to also love yourself, and you also have to write your own poetry on your own self. That is very important. Okay. Spirituality means loving yourself, accepting yourself, making friendship with your own self. And somebody used a very beautiful word that they are very happy with themselves. That is the true happiness of spirituality. You are happy with your own self. You are just happy with your own presence. That is a real mastery. Okay. Thank you, Hi, madam. Meenakshi. Hi, Meenakshi. Sir, I will come straight to the question. I won't share any details. Yes, madam. Your voice is little low, madam. Can you please increase your volume? Mic volume. One second. Is it better? Yes, yes, better. Go ahead, madam. Okay. See, this question is like not out of curiosity. Somewhere I've tried to get answer, but I still don't know. So my question is, you know, out of the 4 paths, although I mean these paths have, all the paths have to be done by all, but is there a primary path? I mean, is there different primary paths for different people, like, you know, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Raj Yoga? So that was basically for me, and I was just contemplating which is my my primary path. Okay. So questions are Sir, we can't hear you. Navneet, take the question. No, you take it, Pradeep. About the, because I think you must have spoken about the yogas, right? Oh, no, you spoke about the Okay. See, all the paths lead to the same destination, right? So again, this subject is called Yoga Parampara. Okay. So just because you asked this question, tomorrow I will speak about it in detail. I will take it as a topic to Yoga Parampara. Thank you so much. Can I ask one more very tactical question? Yes, madam. Go ahead. One is during Mona, is it okay to play musical instruments? And I'm assuming vocal riyaz is not okay, and hence I'm asking this. Yes, yes, playing instrumental is fine. Sorry? Instrumental music, yes, instruments. You play the instruments, that's perfect. But vocal riyaz is not, right? No. Yeah, no, I have not been doing it. I've been practicing Mona earlier also. I've never done it. And one last very quick question. I'll keep it again, a tactical one. For people who are like underweight, and which I am, I sometimes fear that liquid diet would, you know, I'll have a further weight loss. And that's kind of little fear in me. So okay, so if you go to naturopathy centers, okay, so people who are underweight also, they go through a certain detox, because the more toxins your body has, the more your body cannot absorb the nutritions. Okay, so once you go through a certain detox and once you're doing regular meditation, you are happy. So it's your well-being. Your body reflects your well-being. Okay, so if you are feeling happy inside, then it reflects in your body. Okay, so that's why I said you go with your comfort of the body. If you are not feeling comfortable, you don't need to follow it. You have to just go with your comfort. But for your general question, yes, for overweight, underweight, in naturopathy, it's the same cure. Okay, so first the toxins has to be released. The toxins has to be released even for underweight people or overweight people, both the categories. yeah, okay. I mean, the thing was only around the liquid diet. Everything else was good. I just No, you continue. I told, yes, there is a clear guidance. If you're happy with the fruits, go with the fruits. If you're happy with one meal, go with one meal. If you're happy with 2 meals, go with 2 meals. But don't more than 2 meals. That's all. Sure. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, thank you.
नीता जी, कल का टॉपिक योग परंपरा. Yes, sir. Yes. Tomorrow, no Very questions, nice. madam. Okay. We will take only the subject. Yes, sir. Yes. Okay. Next question. सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, किसी की मदर ने कहा था पूछने के लिए, आज पूछ सकती हूँ? क्योंकि आप कह रहे हैं कल भी नहीं पूछना है, तो थोड़ा अर्जेंट था उसको. तो मेरी एक मेरी फ्रेंड है सर, वो काफी डिप्रेशन में थी और डिवोर्सी है. वो काफी स्ट्रगल करके अभी अपनी मम्मी के साथ रह रही है, पर उसको डिप्रेशन की दवाइयां करीब 2-3 इयर्स से चल रही हैं. तो 2-3 इयर्स से वो डिपेंडेंट हो गई है डिप्रेशन की मेडिसिन पे. अभी लास्ट 10 मंथ से उसने मेडिटेशन ज्वाइन किया है. मेडिटेशन करते हुए अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, सब कुछ अच्छा है सर, पर उसकी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो रही है. तो मुझसे पूछी कि मैं 3 दिन बंद किया था दवाई, मतलब 3 दिन मेडिसिन नहीं लिया था, काफी डिस्टर्ब हो गई वो. तो मुझे समझ में नहीं आया सर कि 10 मंथ से वो मेडिटेशन भी कर रही है और उसका डिप्रेशन भी दूर नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई. Okay, so before I answer that question, I think Navneet, you want to say some final words. I know you are going to start a new session in Singapore, so we don't want to hold you. Yes, so you can speak some final words to the group and say goodbye. Okay, I want to thank everybody. Neeta ji, thank you so much. Very beautiful group. Doing meditation with all of you was very nice experience, and hearing all your wonderful transformation because of this retreat, because of Neeta ma'am and Pradeep ji, was very wonderful to hear. And I wish you all best with all spiritual practices of mauna, fasting, raw food, and wish you all the best in your journey. Thank you, Yes, Navneet ji. Please come again. And also we want you to come once again day after tomorrow. You come once again day after tomorrow. We need more relationship lessons from you. Yes, ma'am. Please come again. Please. Yes, day after tomorrow. Come. Yes. Okay. 9 o'clock Singapore time. I have session, but definitely this is for me 6:30 p.m. I can join. I will come. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Navneet. Thank you. Bye. Sir, that day we will do meditation after the session. मतलब last में नवनीत जी से पूरा बात करने के बाद. Actually, I don't know. Yes, just also putting her in a little bit of a trouble by asking her to speak relationships. Anyway, for your question, madam, I just want to tell you, see, it all depends on case-by-case basis. I have seen people who have done 2-3 years of meditation and their issues have not healed, right? But they have given up the meditation and they went back to meditation, they went back to medications and medicines again, and they went back to medications and medicines again, the further complications happened. I've seen that kind of cases also. But I have seen cases where people are trusting the process, and so many things we cannot generalize, right? We cannot generalize. It depends on their karmic baggage. It depends on the trust and the faith they have. Okay, so faith moves the mountains. So it depends on the trust and the faith they have on the process. And a lot of patience is needed, especially if you want to heal, if you want to go through the permanent healing process. A lot of patience is needed, a lot of trust is needed, and you do the right thing will happen. Okay, so we cannot have a timeline. In this particular months, I'm meditating for 10 months. How come it's not healed? So faith plays a very important role. I will give you one case study. There was one of the students, she has some cancer, and she came to know that meditation can help her. So she came into meditation and she was doing like 8 hours, 10 hours meditation inside a pyramid, right? And she like that 10 hours per day. She was doing 10 hours per day, like for 15 days, 20 days. And then she was checking the results and the reports and all the things. There was not much changes happening. So I told her that
You cannot, just have these expectations and then do meditation 8 hours, 10 hours. The more you are having these expectations and the more you will get frustrations. So just surrender to the process. And then what happened? Then she wants to work on other things also simultaneously. So then she started going to another therapist. She started practicing other things, mantra things, visualizations. So she was doing 6 hours Anapanasati, and then she was doing other techniques also. So she was combining too many things, too many techniques, too many therapists, too many counselors, all at the same time, so that she can heal herself faster. So it has become a bad khichdi. So within, she tried like this for 6 months, and then in her report, her complications were getting increased. So I asked her, how do you feel? I said, feeling wise, I'm feeling good, but the results are not showing in the report. See, the reports are physical, right? The reports take up the physical, whatever the changes. But first, the changes happen energetically. So if your feeling is good and then you want immediate reflection on your physical, it might take some time. But she was not having the patience, and she said, no, I'm doing so many therapies, I'm doing so many counseling, I'm doing so many hours of meditation. So finally she quit everything. And then I don't know what happened to her. Then she went for a surgery, and I have no clue what happened to her. So I have seen this case also. So analyzing all those case studies, I came into a conclusion that trust is very, very important. Trust and surrender is very important. I have seen cases, I told you, right, my own mother, she came out of her own cancer. So she trusted, 100% she trusted, and she surrendered. So with that trust and surrender, she healed herself without any medicines, only with meditation, right? And she took some herbal supplements to have little more energy. Yes, you can all take herbal supplements, but no medicines she took. So the trust plays a very, very important factor, trust and surrender. And the karmic baggage also plays a very, very important factor. Suppose if you have a lot of karmic baggage, so then it takes a longer time. So we need to have that patience. So this is very, very important. The karmic baggage, the trust and the surrender. So as long as you have the trust and surrender, then everything is fine. So this is very important. So in your particular case, you're asking that it's she's taking some medicines, now she's doing 10 months and nothing is getting healed. So maybe she might take another 10 months, or maybe she might take another 2 years. You never know. She has to continue the process, but it's up to the individual. तो सर जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन से कर्मास बर्न होते हैं, ऐसे सर्विस से भी बर्न होते हैं, तो उसको सर्विस करना चाहिए मेडिटेशन? बिल्कुल बिल्कुल. If you want faster progress, then do more good karmas. Do more good karmas. See, you have to be very practical. Just because somebody says meditation heals, you have this expectation, then that expectation itself is a big block. Are you enjoying in your meditation? Are you progressing in your meditation? That's it. Then what is the need to worry? Is there a progress or not? She was doing 10 months meditation. Is there a slight progress? Yes, sir. She is very confident now. And, yeah, then that itself is a big result. Yeah. सर जैसे मैंने 10 months पहले देखा था और अभी देखती हूँ तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है मुझे, पर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो वीक है. बाकी that's why the trust is very important. Trust and surrender is very important. Okay, yeah. So don't know how many lifetimes of karma she is clearing. You don't know the baggage, you see. See, 1 kilo of onions you can peel in half an hour. 1,000 kilo of onions takes time. So don't know how much karmic baggage she is having. So she has to trust the process. Thank you, sir. Thank you. Yes, ma'am. Okay, so, okay, friends, so let us, Harshana, Ramesh. Yes. Hello, sir. Hello, can you hear, sir? Yes, madam. If you can be a little bit louder, that will be good. Okay. I wanted to talk about the 2 days, sir. It was very nice for me. I could feel my emotions, where I was going wrong and where I should correct. And I could find out my fears also, but one fear is there, which is from my childhood.
that something wrong will be happening to me, but by God's grace, till now nothing has happened like that. But I don't know why I get that fear always. That is what it's. All fears are karmic, madam. You have certain fears because of your karma. Okay. You have to learn certain lessons. So how do you overcome the fear? Face the fears and try to learn the lessons. Okay. But now I know what the fears are, but I don't know how to. That's why I'm giving you the solution. The solution is you have to face your fears. And why you got the fear in the first place? Because it's karmic. Why you got the fear from your childhood? It's karmic. Maybe there are certain instances which cause that fear. And why did you go through that instance? It's karmic. Everything is planning by the soul. Okay. All fears are karmic. Face the fears. That's it. Okay. Thank you, sir. Yes. So next, Gia. No, madam, you have to check your chair to check your mic, and then please get back. Your voice is breaking. So next, Veena Kushwaha. Veena Kushwaha, can you unmute? Madam, your mic is also not audible. Please, there's a lot of disturbance. You please check your phone, restart, and then get back. Bharti Rathore. This is my first retreat, and today is the 15th day. So, Madam, your voice is also breaking. You please check your mic and then get back. How come this all the participants' mic is like this? Okay, Parol. Next. Good evening, sir. Okay, Sir, this is clear. I am just experiencing sharing that I self-realized that we are not a doer. That we are not a doer on this earth. Whatever happening or whatever karmas in front of us, we learn a lot of things, and we need to drop a lot of things on this path. So we are not a doer. It's just we are moving to reach some destination of our soul. There is no destination, madam. So it's not a destination. You can say it's a soul path that is planned previously, from the previous side, previous birth for this soul journey. Yes. Great, madam. Continue, Mauna. You will have greater understanding. Thank you for sharing. Yes. Riju. नमस्ते सर. मोना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही अच्छा रहा. और एक बात है कि बहुत फियर्स सरफेस में आ गया है, बहुत ज्यादा फियर. और एक बात करनी थी कि हमारे थर्ड आई से या हमारी ड्रीम में कोई क्या हमारे एनर्जी को सक कर सकता है और हमारे एनर्जी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें? I think I have discussed about it in the previous session. Please check the videos. हम नहीं सुने इसलिए नहीं Yes, सुना. there are links available. अच्छा. You can और check एक बात in the, you can check. और एक बात करनी थी सर, ये बात बोलनी थी कि मैं बहुत साल से साक्षी भाव मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन सबके लिए बोल रही हूँ कि आनापानसति में मैंने ज्यादा दिन तो नहीं आई हूँ, 21 दिन भी नहीं हुआ है पूरा तरीका से, लेकिन आनापानसति ने मुझे जितना क्लियरेंस दिया है, जितना क्लियर मुझे अंदर से किया हो रहा है मेरा, वो अभी तक नहीं हुआ था. इतना साल से जो मेडिटेशन मैं कर रही थी, 3 साल से नहीं हुआ. ये मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ कि आनापानसति मैंने ये फील किया है, टोटल मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही आ रहा है कि आनापानसति एकदम बेस है. मेडिटेशन का जो बेस होता है ना, जो मुझे ऐसा लगा कि वो ही एकदम करेक्ट प्रोसेस है कि जो जिसको पकड़ के हम एकदम सीधा तरीके से जा सकते हैं, कभी इधर नहीं, कभी उधर नहीं, एकदम सीधा. ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ. और स्पेसिफिकली थैंक यू टू PSSM एंड थैंक यू टू यू सर. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you.
सर जिया ने एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में. Yeah. Sir, I had cursed someone 10 years ago, and whatever I cursed her, that is really happening to her now. Sir, how can I free her from my curse? I really want her to get rid of from the curse. Learn the lesson not to curse others. Okay, so if you curse others and if your energy is too much, if you have high energy and you curse others, that will manifest, but you have to pay for it. That's a bad karma. You have to pay for that bad karma. So what she can do is learn the lesson and not to repeat the mistake. And whoever the person she got affected, she can do something good to help her. She can do some good karma to her. That's all. So learn the lesson. Don't repeat the mistake and do some good karma to the same person or to anybody in general. Okay. So next, Shashi. नमस्ते सर. Yes, madam. Go ahead. मैंने फर्स्ट रिट्रीट आपका फॉलो किया था, उससे काफी फायदा हुआ था. अभी बुधवार को पहली बार मौन रखा तो 24 घंटे का था, तो 22-23 घंटे में एक बार बोला गया गलती से. फिर लास्ट सैटरडे संडे को भी 48 आवर्स का था, तो उसमें भी 45-46 घंटे में बोला गया. लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से किया और सक्सेसफुली मतलब Very good. का, और मेडिटेशन भी 4 से 5 घंटे किया था. और अभी इतना क्लियर हो गई हूँ कि बस मेडिटेशन ही करना है और अपने सांस से ही जुड़ना है. इसके अलावा बस एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है. मौन का इफेक्ट अभी भी लग रहा है कि अभी भी बात करना है कि नहीं करना है. Okay, madam. Good. और सर फर्स्ट रिट्रीट से अभी तक मैंने 7 kg वेट किया है, वेट लॉस किया है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इस जन्म में हो सकता है मुझसे. तो मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू नीता मैम. Thank you. Yes. Next, Seema. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Sir, I did Mona and I followed your diet also. Sir, I can observe that why should I can observe that why should I control anyone? I have come to evolve myself, not others. And so self-love is very essential. And after you said to sit with the nature, I have a beautiful garden, but I never sat in the nature. And so I sat in the nature for 3 to 4 hours, staring at the sky, walking in the grasses and enjoying. And I felt that connecting with Mother Nature, and I was very much calm and quiet, sir, and I enjoyed very much. And staring at the sky and flowers, different kind of leaves, hug them and talk to them. So after hugging them and talking to them, I felt that self-love, which I was missing, was coming. And I enjoyed that thing very much, sir. And thank you so much, sir, to make me connect to the nature and phone. And after being detached with the phone and iPad for 2 days, I felt very calm and enjoyed a lot in the nature, sir. So thank you so much, sir. Yes, thank you. Very, very good to hear your experience of connecting to nature. Thank you. Next, Sneha. Good evening, sir. Yes, madam. Good evening. Boliye. Sir, our skin problem are also related to our karma. Which, can you come again? Sir, our skin problem is also related to our karma. Every problem is related to karma, whether it is skin problem, body problem, emotional problem, psychological problem, relationship problem, money problem, every challenge is related to karma. So, sir, can it get healed by meditation? Naturally. Every problem has a solution. Every problem has a solution. There is no problem without a solution. Every problem has a solution, and for all the solution, there is only 2. Solution number 1, be a vegetarian. Solution number 2, do meditation. Solution number 3, do more good karmas. Finished. All your problems will be solved slowly. Thank you, sir. That's what I want to ask.
Yes. स्नेहा, One, स्नेहा, 2, 3. जी आंटी। मैंने बताया था अपनी जर्नी में कि मुझे एक्जिमा था 22 इयर्स से। ओ, बॉम्बे में भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, एलोपैथी से लेके सब आयुर्वेदिक, पर सिर्फ मेडिटेशन से ठीक हुआ। अच्छा। मैम एक्चुअली बोलते हैं ना हेरिडिटी है, हेरिडिटी है, अरे सो ऑल द मेरे डॉक्टर्स भी पुश फैमिली दैट। में था। एपिजेनेटिक्स के बारे में जानो, कोई चीज हेरिडिटी नहीं है, हर डीएनए तुम्हारे अंडर कंट्रोल है ना। जी तो डू जी। मेडिटेशन, जो सर ने बताया, वेजिटेरियनिज्म, गुड कर्मास करो। मैंने तो सिर्फ मेडिटेशन किया, विद इन 3 months जी एक्जिमा आंटी। से फ्री हो गए। थैंक यू सो मच आंटी। Okay, but you don't expect 3 months. You might हाँ, take longer or lesser. Depends on your onion bag. Yes. Depending on your karma, not onion bag. Sure, Depending sir. on your Thank you. karmic baggage. So don't have any expectations. Just trust the process and continue. Okay. Thank you so much, sir. Yes, thank you. And yes, Sunita Gauba. Pranam sir, Pranam ma'am. Yes, madam. I joined not from the beginning. I joined 1 or 2 days late. Then Buddha Purnima day I did Mona, and I'm a pure vegetarian from the beginning. And I was following diet also, but in between I had duties for vaccination. So I, like you said, 2 days meal. That day I was not there. So I started 1 day or 2 days late like that. And then I went for vegetables and fruits only, raw diet. Now for the last 3 days, I'm on the liquid diet only. But Mona, I did Budh Purnima day and Saturday. Sunday I could not do last week. This week also, you asked to write the fears. I wrote the fears, and I don't know. I was self introspecting later on. Saturday also and Sunday also I could not do Mona because something or other was coming up. And Sunday, my Madam, husband. you have come on the video. You have come on the video to share all those things. Or I'm do you telling have about. anything? No, you say I cannot do it. I can't do it. I mean, you No, are not able sir. to follow from the beginning. I could not do, but I felt that this is the fears were going out because of that, because conditions came like that. That's what I wanted to. Nothing else, sir. Okay. I could not, but I'm following diet and everything. Conditions were like I had to go with my husband to the hospital today. Also, just Okay, now I came and I did. Huh? Okay, all right. Thank you. Okay. Sudhaji. Namaste, sir. Good evening to you. Yes. My awareness after the Mauna, the next day, what I realized is whenever I speak to my children or my husband, is it required to speak? That question, everything arises. And the parenting, second is parenting with the teenage No, let's children. go one by one. Let's go one by one. I think we have given clear instruction. Mauna means absolutely no speaking. If you have any emergency, you can write the show. No, after I experienced Mauna, today, whenever the communication had to happen with my husband or the children, I always had that. Is it required? I mean to say that unnecessary talks was not required. I filtering whether it is required to talk or not, that I started experiencing. Then second thing is parenting, friendship parenting. That I could, it was very difficult, like very ordering and all that was there. But now that friendship parenting, even my children could start feeling it. It became very easy. And yesterday, out of this diet and out of the Mauna, I could continuously sit for 6 hours of meditation. I experimented. Thank you so much, sir. Okay, thank you. So you're sharing your experience. Good. So I thought you were asking questions. Right. Thank you very much. Good. So final question, Preet. Thank you, sir. Sir, I want to know about the cord cutting, sir. What is क्या होता है exactly cord cutting? क्या ये काम करता है, sir?
Now, what is your question? I don't understand. Can you speak? Sir, Cutting I the cord, sir. think, sir, emotionally जब से attach होते हैं, that is why you are asking, ना? Emotionally attached जब detach होना हो. Not on. I mean, not only emotionally, but cord cutting जो मैंने सुना है कि What is that you are cut asking? the cord. Grass cutting? Cord. Cord cutting. Which cord you are referring to? So that is what I want to know. What No, is sir. it? No, That sir. cord cutting, sir. Sir, I heard many times. जब हम किसी से emotionally attach होते हैं ना, तो while in meditation, some master came to come and cut the cord between you and your friend or beloved or your lover, someone. That person. That person. That means you will become free from that person. It is called cord cutting. Emotionally, when we are attached to someone. Like a grass cutter, you have a cord cutting. Yes. Okay. Yes, See, in Australia, once in a month, we have to call the gardener. He will do the grass cutting. It is compulsory. You have to do grass cutting once a month. So like this, we have somebody who cuts the cords between, if two people are not happy, somebody you call and they will come and cut, is it? Yes. Okay. सर ऐसा होता है क्या सर? I don't know, madam. Preet, I have सर done अगर once. आप नहीं बताएंगे तो I have done सर आप नहीं once. बताएंगे कहाँ से बात कर रहे हैं? रायपुर से सर. रायपुर से. सर नीता मैम के ग्रुप से हूँ. Okay. Please give me the contact of the grass cutting, madam. I also will pass on some people. If somebody asks, then it's easy, na? So many people are having relationship problem. Give the contact number. They will come and cut the cords. All right. So you see, cutting the cords. I mean, it's not about cutting the cords. It's all about transformation. Okay, we have to transform every relationship into friendship. There are certain relationships which you are not happy about it. But there is no need to cut the cords or anything. Just you go away 1 feet away. If you're not happy with somebody, just keep a distance. But you don't need to cut the cords or you don't need to join the cords. Is it like a tailoring shop or what? Cutting and stitching and joining. It's all about transformation. Spirituality is all about transformation. Okay. Yes, there are certain times, some people, they affect you, and so it's very simple. Go far away from them. Have your own space. Work on yourself. If you are strong, who can disturb you? Nobody can disturb you if you are strong. But in spite of you minding your own business, somebody is coming and voluntarily disturbing you, you avoid. Just keep a distance and focus on your own work. So this cord cutting business, I never heard of it. So looks like a very profitable business only, but I never heard of it. सर मैंने एक बार ट्राई किया था किसी फ्रेंड के लिए, पर मैं तो फेल हो गई. मतलब अटैचमेंट जा नहीं रहा था. फिर जब अंडरस्टैंडिंग आई कि मुझे अपने सोल पर्पस पे ही ध्यान देना है, तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आई तो खुद ही कॉर्ड कट गए. Yeah, that's what I'm saying. It's the transformation. It's the transformation which is important. There is nothing to do outside of you. There is something you can do inside of you. You see, it is on a practical life, in a day-to-day practical life. There are some people which will irritate you. There are some people which makes you feel a little bit awkward. Yes, it happens naturally. Then how do you deal with that? Just think practical. How do you deal with somebody who you are not comfortable with? Just go away. Create a space, create a kind of somebody is calling you, don't lift the call, as simple as that. You have all the free will, how to manage your relationships. Truth is very simple, yeah. It's the mind which complicates. You see, in the olden days, our grandmothers, great-grandmothers and grandfathers, they lived the life very simple. They never did the cord cutting, they never did the light language, they lived a happy life. Why are we complicating our life? Aura cleaning, car wash, grass cutting. I mean, this is getting too much here. Try to be very simple. Life is meant to be happy and simple. Okay, friends? I think this is... Did you heard, sir? Didn't you hear about this, sir? Which one? Cord cutting, sir? Australia mein ya America mein? Yeah, I heard, madam. I heard.
I heard cord cutting, but the problem is you do the, see, there is some track or light language. You hear that, then the cords are cut. That is what they say. But the problem is not with the cords. The problem is with the person. You see, you hear today, you feel like you are relaxed, but tomorrow you have the same problem because the transformation has not happened from within. So the same problem will be there. So every day in the morning, you listen to that audio track, and then after 1 month, you become pagal only. So it is like this kind of nonsense also happens. You should be very practical and simple. With some place, with some people, you are not comfortable. Maintain a distance. Don't hate them. This is what Buddha used, upeksha, right? He used the word upeksha. This is the 4 great things he told. There are only 4 categories of people. Spiritually lower than you, spiritually higher than you. Materialistically lower than you, materialistically higher than you. So how do you deal? So everybody on the whole, or everybody on the whole of the planet Earth, they come under these 4 categories and permutation combination. Spiritually higher than you, spiritually lower than you. Materialistically higher than you, materialistically lower than you. How do you keep these kind of relationships? If somebody is materialistically lower than you, have some kindness. You have more money, the other person has less money. Have some kindness. If you can do some help, do it. Have some kindness. And materialistically higher than you. So somebody is materialistically more than you. Make friendship. Okay. Spiritually, somebody is greater than you. Somebody knows more concepts and somebody is a senior meditator. Have obedience. With obedience, you can learn a lot of things. With our teachers, we are all obedient. You see, unless you are obedient, you cannot learn from the teacher. So if you want to learn from a spiritually greater person, have obedience. Then you can learn all the things. And you have somebody who is spiritually very, very less than you, who is not at all interested in spirituality. Then upeksha. He used the word upeksha. Upeksha means you don't hate him, but maintain a distance. Just ignore him. Upeksha means ignore. Don't hate, but just ignore. So you can try all those permutation combinations. Okay, somebody is financially very rich, but spiritually not at all interested. Then upeksha. Somebody is financially very rich, but spiritually he is interested. Friendship. Okay. So somebody doesn't have any money, but he has more knowledge. Obedience. Okay. Somebody is a very good person, but he doesn't have money. So just help him financially. Karuna. So these are the 4 qualities we all have to reflect in our relationships. I follow upeksha. If somebody is not interested and somebody is trying to suck my energies, what is the need to cut the cords? Upeksha. Full stop, finished. And you cannot use cutting the cords with your husband-wife. Okay, that will be a disaster. Okay, cutting the cords with husband-wife is disaster because husband-wife is a karmic relationship. Try to reflect on it, try to learn the lessons, then you cannot cut the cords. Then where is cutting the cords useful, you tell me? So truth is very simple, madam. We have to take the things simple. Try to understand the things very simple. All right, friends, on this note, I think last answer is superb, sir. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये आखिरी का आंसर और मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी इसको ग्रुप में. Yes. Thank you very much, madam. And tomorrow we will go with the concept. Yog Parampara. Yog Parampara, sir. We will understand a little bit about yoga, different yogas and those significance. So we will discuss that. And once again, thank you very much. Namaskar. So today is this week is the last week. So let us try to consolidate. And again, I repeat, for the people who are not comfortable with the liquid diet, go with the fruits. And for the people who are not even comfortable with the fruits, take one meal. Okay. So be sensitive to your body. This is very, very important. And take everything as an experiment. And you have to be comfortable and you have to enjoy this journey. That is more important. Once again, namaskar. Thank you very much. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से ट्रांसलेशन कर दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट आंसर्स है वो.
मुझे अब क्वेश्चंस भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चंस भूल जा रही हूँ। एक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, एक्सपीरियंस को मैं छोड़ दे रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि मेरे घर में मुझे कोई भी काम करने के लिए हेल्प नहीं करता है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, और मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और मैं उनको जब उनके बारे में सोचती हूँ तो क्या ये जजमेंट है? तो सर ने कहा था कि ये जजमेंट नहीं है, पर तुम जो भी नेगेटिव भाव से उनके लिए खाना बना के उनको सर्व कर रही हो, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी उनके पास पहुंचेगी। मतलब जो भी आप उनके बारे में सोच रही हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम आपके पार्टनर्स और आपके फैमिली को झेलना पड़ेगा। तो आप सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप सपोर्ट करने के लिए उनसे कहिए, आप उनको बहुत ही हेल्दी वे में कम्युनिकेट करिए और अपने तरफ से समझाइए कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ या मैं थक जाती हूँ और मुझे आप लोग हेल्प करिए। या ये भी कह सकते हैं कि मैंने खाना बना लिया है, अब आप लोग सर्व करिए क्योंकि मेरा मेडिटेशन और मौना है करके। तो आप जब तक के प्यार से उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक के वो नहीं समझेंगे। औरतें जब अपने गुस्से को और अपने कंप्लेन को अपने मन में दबा लेती हैं, जो वाणी के दबाव के कारण होता है, इसी के लिए औरतों को सबसे ज्यादा थायराइड के प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो औरतें बोलती तो बहुत ज्यादा हैं पर संवाद नहीं करती हैं। बोलना मतलब हम बोलते हैं सिर्फ, पर जिससे हमें संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है, रिलेट करते हैं जिनसे, हम उनको नहीं बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि उनको आप अपना दुख, अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करिए। और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में भी वो नहीं समझ पा रही थी, तो रिएक्ट होता है कि आप तुरंत जैसे को तैसापन करते हैं कि किसी ने 2 बातें बोली, हम तुरंत उसको वापस कर देते हैं, तो उसको कहते हैं रिएक्ट करना। पर रिस्पॉन्ड का अर्थ होता है कि जब भी कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि मैं अगर इसके साथ ऐसा ही बोलूंगी तो मेरे को क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यदि कोई बोल रहा है और मुझ में गुस्सा आ रहा है तो उसका कारण क्या है, अपने रूट कॉज को ढूंढना, अपने आप को अपने इश्यूज को देखना कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है, क्या उससे आपको जलन है, क्या उससे आपको नफरत है, या आपका खुद का गुस्सा अपनी हेल्पलेसनेस के कारण है। फिर आप उससे अच्छे से बात करके उस चीज को जब आप सामने प्रोजेक्ट करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, तब उसे कहते हैं रिस्पॉन्ड। रिएक्शन प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्ड अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने आप को समझ के फिर संवाद करना है, तो उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। नवनीत जी आई थी, उन्होंने कहा था नॉन इंटरफियरेंस हमारी रिलेशनशिप, हमारी मैरिड लाइफ का मेन मोटो है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई इंटरफियर करे। और बचपन में जब हम लोग को बार बार कहा जाता है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, और हम बचपन में ही अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज करते थे कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं करता, मेरे को ऐसा बनना चाहिए, जो भी हम अपने सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं वही हमारे आगे चल के रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। तो जब आप ये सब प्रॉब्लम से गुजर रही है तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम पूर्ण दया भाव से रहना चाहिए, काइंड टू योरसेल्फ, है ना। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, खुद के साथ आप अकेले बिताइए, अपने आप को प्यार करिए, कॉफी पीजिए। और जो कोई मदद नहीं कर रहा है और हम जब ब्लेम करते हैं तो इसको हम कहते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस। और ये विक्टिम कॉन्शियसनेस हमें आती है बचपन से ही, हमारी जो परवरिश होती है उस समय की, ऐसा करो वैसा करो, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो नो ब्लेम, कोई भी किसी के ऊपर दोष नहीं देना है। जो भी आपके हस्बैंड या बच्चे मदद नहीं कर रहे हैं तो अपने प्रति आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए। ये माया है जो हमें इस तरफ ले जाती है। अगर आप उसकी तरफ नोटिस नहीं करेंगे कि वो हेल्प नहीं कर रहा है या वो मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कह रही थी नवनीत जी की मुझे भी ये बार बार अराइज होते थे, मेरे मन में विचार आते थे, जब मैं उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं देती थी और उनको फॉलो नहीं करती थी तो वो धीरे धीरे मुझे अफेक्ट भी नहीं करती थी, वो चले जाती थी। तो कभी भी कितनी भी बुरी परिस्थिति हो अपने आप को पीड़ित, विक्टिम नहीं समझना चाहिए। बचपन में जो हमें समझाया गया है कि तुम ऐसा
हो, ऐसे हो, वो हम नहीं हैं, हम उनके बियॉन्ड हैं। तो जो हमें टैगलाइन, जो लेबल दिया गया था, उनको छोड़ दीजिए, अपने आप को, खुद को समझिए। रिलेशनशिप के ऊपर सर ने कहा था कि ये नेवर एंडिंग रिलेशनशिप होता है, और ये कोई भी बुक में करिकुलम या पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है कि आप उनको देख के आप समझिए कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप एक मिरर रिफ्लेक्शन है जो आपको अपना ही आईना दिखाता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसके ऊपर काम करो। फिर से उन्होंने कहा था कि विमेन बोलती हैं परंतु संवाद नहीं करती हैं। 2 वेज होता है अपने पार्टनर से बात करने का। एक तो आप सिर्फ अपने हस्बैंड को बोलती हैं, और दूसरी बात जब आप उसके साथ संवाद करती हैं, मतलब प्रेम पूर्वक आप समझाती हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आप बात नहीं करेंगे तब तक कि आपका पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप विकास कर पाए। आरती जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं प्राणायाम कई समय से कर रही हूँ तो अब मेरी सांसें लंबी हो गई हैं, और जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तब भी मेरी सांसें वैसे ही चलती हैं, तो क्या वो मेरी स्वाभाविक सांसें हैं या मैं बड़ा कर रही हूँ? तो सर ने कहा यदि आप फोर्स नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं लगा रहे हो और आपकी सांसें लंबी हैं तो वो आपकी स्वाभाविक है, और यदि आप जोर लगा रहे हो तो आप स्वाभाविक रूप से सांस लो। लाइट लैंग्वेज के मेडिटेशन के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ कि जो भी वर्कशॉप हो रहे हैं लाइट लैंग्वेजेस के, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के ग्रुप में जाके आप उनको ज्वाइन करिए। लाइट लैंग्वेज सिर्फ एक बोलने की भाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सभी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही आत्मा की और दूसरे डायमेंशन की बोलने की एक भाषा मात्र है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर चूंकि आप ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं तो उस समय आप थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, जैसे हम पिरामिड में बैठ के ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, या नेचर में बैठ के जब हम ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट लैंग्वेज की वर्कशॉप में आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, पर आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपनी नॉर्मल ब्रेथ को ही फॉलो करते रहेंगे, उसको फोकस ही करते रहेंगे, तो कोई भी आपको लाइट लैंग्वेज, कोई भी स्पिरिट गाइड की जरूरत नहीं है। वो खुद ही दूसरे डायमेंशंस के लोग आपके पास आके आपकी हेल्प करेंगे। सर ने बताया कि मेरे भी दोस्त हैं जो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, और मैं कई एक्सपेरिमेंट भी किया हूं उनके साथ। मैंने देखा है कि वो मास्टर हैं, पर हमें अपने को सेल्फ मास्टरी सीखना है। पर एक बार मुझे बहुत ही सिवियर हेडेक हुआ, तो मेरे दोस्त आया था और मुझे देखते ही उसने बोला कि तुम्हें हेडेक है क्या? तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने तो उसे बताया भी नहीं था, उसे कैसे मालूम चला कि मुझे हेडेक है? तो उसने कहा कि सहस्त्रार में तुम्हारे ब्लॉकेजेस दिख रहा है एनर्जी का। तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि रामपा जी ने भी कहा है कि यदि आपके निम्बस में ग्रे कलर का स्पॉट दिख रहा है तो आपका हेडेक है। मुझे अच्छे से याद है, इससे मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने देखा होगा, तो ब्लॉकेजेस है, तो उनके फ्रेंड ने ऑफर किया कि क्या मैं तुम्हारा हेडेक दूर कर दूं? तो प्रदीप सर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा हेडेक दूर कर दो। और उसने थोड़ी ही देर में उसे कुछ लाइट लैंग्वेज में बोल के उसे हील कर दिया। और सर बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया कि आपने पहचान भी लिया और मुझे हील भी कर दिया। उसके बाद वो शॉपिंग वगैरह पे जाके घूम फिर के वापस आए जब रात को घर में, तो बीच रात में उनको फिर से हेडेक शुरू हुआ। तब सर को रियलाइज हुआ कि ये जो लोग गिफ्टेड हैं, जो हीलर्स हैं, जिनको लाइट लैंग्वेज आती है, वो मुझे ठीक तो कर पा रहे हैं, पर मुझे टेम्पररी ठीक कर रहे हैं, मेरा परमानेंट इलाज वो नहीं कर पा रहे हैं। परमानेंट इलाज हम सबका अपने खुद के पास है। ये हमें बहुत लुभावना लगता है कि कोई आता है एस्ट्रल मास्टर या लाइट लैंग्वेज कुछ करके चला जाता है और हमें एनर्जी का एहसास होता है, तो हमें बहुत ही फैंसी लगता है, आकर्षक लगता है, पर इसमें हमें नहीं रहना चाहिए। मैं उस रात को फिर खुद ही मेडिटेशन करके अपने आप को हील किया। और सर ने कहा कि 24 आवर्स का मेडिटेशन एक दिन पूरा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? अपना आप कॉमन सेंस लगाइए और अपने हार्ट से पूछिए
और कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा। किसी भी चैनलिंग मैसेज को फॉलो मत करिए, अपने सिर्फ दिल की आवाज सुनिए, सुनिए उनकी भी। और अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए तो आप जाइए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको करिए और खुद महसूस करिए कि आपके में क्या है। जो भी ये एस्ट्रल ट्रैवल या डीएनए वर्कशॉप या कुंडलिनी या लाइट लैंग्वेज या रेकी चैनलिंग, जो भी ये वर्कशॉप हो रही है, वो सभी अच्छे लोग हैं, उनके इरादे बहुत ही नेक हैं, वो दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हैं। पर तुम्हें क्या चाहिए वो सिर्फ आप ही डिसाइड करिए। हमें उनको जज नहीं करना है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, पर आपको क्या चाहिए। वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मार्केटिंग या एक तरह से लुभाने के लिए, या आपको जैसे कभी कभी एक ही खाने से बोर हो जाते हो तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो या आइसक्रीम खा खा के बोर हो जाते हो तो उसमें चेरी कुछ फ्रूट्स डाल देते हो, सिर्फ कुछ ऐड करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। तो आप उनको बिल्कुल भी जज मत करिए। आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए। ऑरा वर्कशॉप का भी सर ने सुना था तो उन्होंने भी कहा कि इनके इंटेंशन बुरा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को एक ही टाइप का आनापानसती मेडिटेशन करते करते बोरिंग लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए वहां जाके थोड़ा दिल बहला के वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको भी है ऐसे दिल बहलाने की जरूरत तो आप बिल्कुल जाइए। इनकी चिंता मत करिए और नहीं इनके साथ बहुत ही सीरियसली आगे बढ़िए, पर फिर भी आप लोगों की मर्जी। एक ने कहा था कि मैं इंडिया में आके मैं बीमार पड़ गई थी और फिर मैं केरला वगैरह गई और 3 महीने तक के मैं आनापानसती मेडिटेशन कर रही हूँ, और इतना लंबा बोलते हैं कि सर भी इरिटेट हो जाते हैं। कितने बार मैं बोलूंगी, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है सर के पास। सर ने कहा कि आप वो उन्होंने आखिरी में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, क्या आनापानसती से मेडिटेशन से मैं ठीक हो जाऊंगी। वो पहले भी पूछ सकती थी, पर उन्होंने पूरा 15 मिनट की अपनी जर्नी बताई। किसके पास टाइम है जो हम आपकी जर्नी सुने। अगर हम सबकी जर्नी सुनने लग जाएंगे तो शायद 6 महीना हमारा बीत जाएगा। मैं अपनी ही जर्नी नहीं बताई हूँ अभी तक के। तो चलिए ठीक है। एक और ने कहा था कि रिट्रीट के बारे में, तो नवनीत ने कहा था कि रिट्रीट में जो भी हम तुमको आप लोगों को डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं, इसलिए करने के लिए कहते हैं ताकि आपकी बॉडी हल्की महसूस हो आपको और आप वेजिटेरियन बन जाइए, क्योंकि हम एनर्जी बीइंग हैं, हम बॉडी लिए हुए हैं, तो हमें बॉडी की केयर करनी है। और जो भी डिजीज आ रहे हैं वो आपके कर्मा से ही रिलेटेड हो सकता है। इस जन्म में शायद आप वेजिटेरियन हो, जो इस लेडी ने लंबा वाला अपना जर्नी बताया था उसी के बारे में कह रही थी कि ठीक है इस बार इस जन्म में आप वेजिटेरियन हैं, आपने कोई हिंसा नहीं करी, पर पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने बहुत नॉनवेज खाया हो या क्रुएलिटी, किसी जानवर के ऊपर आपने अत्याचार किया हो, इसके कारण आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हो गई है उसके कारण आपको अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्योंकि इस जन्म में सिर्फ हम इसी जन्म के कर्म नहीं भोगते, हम पिछले जन्मों के भी कर्म भोगते हैं। तो आप मेडिटेशन करते जाइए, आपकी एथरिक क्लींस होते जाएगी और धीरे धीरे आपकी बीमारियां चली जाएंगी। सर के ऊपर जब पुलिंग वाला सेंसेशन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी एनर्जी मूलाधार से सहस्रार की तरफ जाती है, तो कई लोगों को पुलिंग वाला एक्सपीरियंस भी होता है। तो एक ने और एक्सपीरियंस बताया था कि केलर हेलर के समान में बहुत इंट्यूटिव हो गई मोना में और रियलाइज करी कि हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने काफी चीजें घर से बाहर फेंक दी है, पर कुछ एक चीजें अटैचमेंट के कारण बाहर नहीं फेंक पा रही हैं। तो सर ने कहा कि डिटैच होइए और क्लीन करना शुरू करिए। एक ने कहा था कि मैं दुविधा में हूँ कि मैं सोल प्लानिंग के बारे में जानना चाहती हूँ कि एक आदमी आदमी को मार रहा है तो क्या ये मर्डर करना भी प्लान है। तो नवनीत जी ने आंसर दिया था कि रेप करना, बलात्कार करना या किसी को लूटना, रॉबिंग करना या एक का दूसरे से हत्या करना भी प्लान होता है। पहले से ही पैदा होने के पहले ही आत्मा यदि एक इंसान ने उसे मारा होता है तो वो प्लान करके आती है कि जिस इंसान ने मारा है उस इंसान का वो मर्डर करेगा। ये सिर्फ अनुभव
लेने और देने का और उस लेसन को पढ़ने का तरीका होता है सोल का। तो पिछले जन्म में जो भी कर्म किए रहते हैं मर्डर के रूप में, वो इस जन्म में भी आपके साथ हो सकते हैं। तो ये भी एक सोल प्लानिंग है। इस पृथ्वी पर कोई भी अन्याय नहीं होता, और कई लोग जो बहुत सारी हत्याएं करते हैं वो ऐसी सोल्स होती हैं जो डार्क एजेस के लिए काम करती हैं, मतलब डार्क फोर्सेस के लिए काम करती हैं। वो अपने पृथ्वी पर आकर बहुत सारे लोगों का मर्डर करती हैं, पर चूंकि हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं तो आपको उनकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। और सर ने उस लेडी से कहा था कि आप जो इतना मर्डर्स और सोल प्लानिंग और इन सब के बारे में पूछ रही हैं, तो यदि वही क्वेश्चन पूछिए जो आपके सोल इवोल्यूशन में मदद करे। आप अपनी क्यूरियोसिटी, सिर्फ उत्सुकता को जानने के लिए कि ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, क्वेश्चन मत पूछिए। और क्यूरियोसिटी यदि इतनी है आप में तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए। हम लोग ग्रुप्स में इतनी बुक्स शेयर कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग शायद वो बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक ने पूछा था कि रिलेशनशिप में ईगो का क्या महत्व है, क्या ये सही है या गलत है। तो नवनीत जी ने कहा था कि ईगो हमारी सेल्फ इमेज है जो हम अपने आप को उसमें बांध के रख लेते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों जने अपनी अपनी सेल्फ इमेज में करती हैं कि मैं पति हूं तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, मेरी पत्नी मेरे को ये काम करके देगी, पत्नी कहती है कि वो मेरे पति हैं तो वो मेरे लिए ये काम करेंगे, मैं पत्नी हूं तो मैं ये काम करूंगी। हर एक का माइंडसेट उस बिलीफ सिस्टम के साथ जमते जाता है, और ये दोनों सिर्फ रोल्स हैं, सिर्फ भूमिकाएं हैं जो पृथ्वी पर वो चुन के आई है कि हस्बैंड है कि वो वाइफ है, पर वो वास्तव में सिर्फ एक फ्रेंड्स ही हैं। आपको अवेयर होना है कि आपका रोल क्या है। ये जो ईगो जो फीलिंग है वो अगर आपके रोल से अटैच हो गई तो आपका जीवन दूभर हो सकता है। आप इस फीलिंग को मत रखिए, पर एक फ्रेंड्स के समान बिल्कुल हंसी खुशी अपने काम को करते रहिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ आपको मेडिटेशन के ही थ्रू मालूम चलेगा, क्योंकि नवनीत जी ने कहा कि बहुत से आंसर्स ऐसे होते हैं जो कोई किसी को नहीं दे सकता कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। ये सभी आंसर आपको मेडिटेशन में मिलेंगे, क्योंकि आपकी अवेयरनेस मिलेगी। तो नो रिएक्शन, जस्ट रिस्पॉन्ड करना है। और मेडिटेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करके अपने पार्टनर के साथ क्या व्यवहार करना है खुद स्वयं को जानना है। मीनाक्षी जी ने कहा था कि बहुत सारे 4 जो योग होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, तो इसमें से मेरा मुख्य मार्ग कौन सा है मुझे बताइए। तो सर ने कहा कि मार्ग बहुत अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है। और इसी योग परंपरा के ऊपर मैं कल पूरा सेशन लूंगा, तो कल हम जानेंगे वो चारों योग के बारे में। और उन्होंने, मीनाक्षी जी ने पूछा कि मौन में क्या हम इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। वोकल में रियाज जो करते हैं जो सिंगर्स लोग वो नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, मैंने नहीं किया है, पर क्या मैं वो कर सकती हूँ। तो सर ने कहा कि जब मौना रहे आपका तो आप वोकल रियाज मत करिए, मतलब आवाज के थ्रू आप रियाज मत करिए, पर इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं। वो अंडरवेट है तो वो लिक्विड डाइट के लिए कह रही थी कि मेरा और वेट लॉस हो जाएगा तो क्या मैं फर्दर इसको करते रहूं। तो सर ने कहा कि लिक्विड डाइट का अर्थ वेट कम करना नहीं है, ये डिटॉक्सिफिकेशन है। और नेचुरोपैथी में चाहे आप वजन कम करके जाएं या वजन बढ़ा के जाएं, दोनों ही गलत होते हैं, और वो भी आपको पहले डिटॉक्स कराते हैं, क्योंकि जब तक कि आपके टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेंगे तब तक के आप जो आप भोजन कर रहे हैं उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आप जब तक के अंदर खुश नहीं रहेंगी तब तक के आपके बाहर खुशी नहीं झलकेगी। पर अगर आपको लग रहा है कि आप इस लिक्विड डाइट से और वेट लूज कर रही हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप फ्रूट्स खाइए, आप उसमें खुश रहिए। अगर वो भी पसंद नहीं है तो 1 मील खाइए, पर 2 मील से ज्यादा कभी भी नहीं खाना है, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो ज्यादा भोजन हमारे मेडिटेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में बाधा करेगा। मैंने एक लड़की का पूछा था क्वेश्चन जो काफी समय से मेडिटेशन कर रही है परंतु मेडिसिन भी ले रही है क्योंकि उसको काफी सीवियर डिप्रेशन है। 3 दिन उसने दवाई छोड़कर देखा पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने मेडिसिन शुरू किया। वो 5-5 4-4 घंटे भी मेडिटेशन करती हैं, काफी कॉन्फिडेंट हो गई है वो लड़की। पर उसके बावजूद अगर उसको प्रॉब्लम्स है तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 10 मंथ्स की स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसी कौन सी चूक हो गई है जो वो नहीं कर पा रही है। तो सर ने कहा
कि देखिए कर्मा के अपने अपने बैगेज हैं। कई लोगों के कर्मा के बैगेज 2 किलो के हैं, कई के 10 किलो के हैं। हम नहीं जानते हैं कि उसका बैगेज कितना बड़ा है, क्योंकि डिप्रेशन भी उसके कर्मा से रिलेटेड है। उस लड़की को अपने ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखना चाहिए, और इस प्रोसेस जो आनापानसती मेडिटेशन है उसके ऊपर भी फेथ रखना चाहिए, और धैर्यता पूर्वक उसको कंटिन्यूअसली करना चाहिए, और उसे अपने गुड कर्मास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, दूसरों के लिए सही काम करना चाहिए, ताकि उसके गुड कर्मास बढ़ते जाएं। उन्होंने कहा था कि मैं एक कैंसर पेशेंट को जानता हूं जिसको कहा गया था कि मेडिटेशन उसको हेल्प करेगा, तो वो 8-10 घंटे मेडिटेशन करने लग गई, और उसके बाद तो वो हर रोज 10 घंटे मेडिटेशन पिरामिड के नीचे करने लग गई। 20 दिन के बाद उसके रिपोर्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैंने मतलब प्रदीप सर ने उनसे कहा कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, पर उसे करते रहो और सरेंडरेंस में रहो, समर्पण भाव से करो। पर 6 मंथ तक के शायद वो एक्सपेक्टेशन जो उसको ज्यादा रोड़े अटका रहा था, एक्सपेक्टेशन के बावजूद करते गई, और 6 महीने के बाद उसने आनापानसती मेडिटेशन को छोड़ दिया। वो दूसरे थेरेपी में गई, मंत्रा चैंटिंग वगैरह दूसरी थेरेपी करने लग गई। कुल मिला के उसकी लाइफ एक खिचड़ी के समान अलग अलग थेरेपी से भर गई। रिपोर्ट उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, जबकि सर को कह रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें पेशेंस नहीं था। उसने बहुत सारी चीजें एक के ऊपर एक करती रही, एक चीज को पकड़ के दूसरे चीजों को पकड़ती रही, और आखिरी में उसे सर्जरी करानी पड़ी। और मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हाल है और वो कैसी है। सर ने कहा कि मेरी मदर जो कैंसर पेशेंट थी, उसने ट्रस्ट किया इस प्रोसेस पे, सरेंडर किया, समर्पण किया, और उनकी मदर ठीक हो गई बिना कोई दवाई लिए। पर सिर्फ वो हर्बल सप्लीमेंट लेती थी। सबके अपने अपने कर्मा बैगेज होते हैं। किसी का कम समय लगता है, किसी का ज्यादा समय लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 10 महीने लगता है। ये हर एक व्यक्ति, हर एक सोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें बिल्कुल साइंटिफिक सर्विस, हाँ उसको बिल्कुल सर्विस करनी चाहिए। अगर उसके कर्मा के बैगेज ज्यादा है तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे ब्लॉकेज बढ़ाते हैं। फियर के लिए किसी लेडी ने पूछा था कि मुझे बहुत फियर होता है, तो फियर सारे हमारे कार्मिक होते हैं, और फियर को सिर्फ फेस करना है और अपने लेसन को सीखना है। जो भी हमारे बचपन में घटनाएं होती हैं या हमारे पिछले जन्म में घटनाएं होती हैं जो हमारी फियर एनर्जी के कारण हो पा रही हैं, वो हमारी कार्मिक बॉन्डेज हो जाती है और हम इस जन्म में भी लेके आते हैं। तो एक ने कर्ज के लिए पूछा था कि मैंने किसी अपनी फ्रेंड को अभिशाप दे दिया था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कर्ज को क्या बोलते हैं, अभिशाप या श्राप दे दिया था कि उसके साथ ऐसा हो। 10 साल के बाद वैसा ही उसके साथ हो रहा है। अब मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं क्या करूं कि वो उससे मुक्त हो जाए। मेरे को उसकी पीड़ा देखना पसंद नहीं आ रहा है। तो सर ने कहा कि आप कई बार होता है कि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और किसी को श्राप देते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर वो उस तक के मैनिफेस्ट हो रहा है तो आपको बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रायश्चित आपको करना ही पड़ेगा, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। अब चूंकि मैनिफेस्ट हो चुका है तो आप उसके लिए थोड़ा अच्छा करिए। और आपका लेसन ये है कि कभी भी गुस्से में या किसी भी परिस्थिति में किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए। हर एक इंसान यहाँ पर भूमिका अपनी अपनी निभा रहा है, और हम उस भूमिका को देखकर सिर्फ एक दूसरे को कर्ज करते हैं या किसी के लिए बैड सोचते हैं, अमंगल सोचते हैं, तो हमें खुद को भुगतना पड़ता है। तो आप उसके साथ अच्छे से उसके साथ अच्छा करिए। कॉर्ड कटिंग कुछ भी नहीं होती है। आप लोग खुद भी समझ गए होंगे कि अगर हम किसी से बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमें उससे दूर जाना चाहिए, तो हम हर संभव कोशिश करते हैं, परंतु टाइम हील्स, समय लगता है उस अटैचमेंट से दूर होने में। तो ये जो गूगल में और काफी वर्कशॉप में मैंने भी सुना है कि कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, आप इस मास्टर को बुलाइए, महाअवतार बाबा जी को बुलाइए, वो आप दोनों के बीच में ग्रीन कलर का कॉर्ड है, ब्लू कलर की सीजर है, आप काटिए। तो मैंने भी ट्राई किया था, पर मैं डिटैच नहीं हो पाई थी। तो फिर मुझे लगा कि ये सब फालतू चीज है, पर मैंने 2-3 दिन किया था, पर मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद को ही अपने को स्ट्रांग बनाना है। मेरा सोल पर्पस क्या है, क्या चीज मुझे ऑब्स्टिकल कर रही है, तो मैं खुद ही
उन सब चीजों से डिटैच होने लग गई। अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% हर एक से डिटैच हूँ, पर फिर भी बहुत हद तक के हो गई हूँ। तो सर ने कहा कि यदि आपको कोई दुख दे रहा है तो पहली बात तो आप उसको अलाउ कर रहे हो, कि आप उसको इतना अंदर आने दे रहे हो अपने बाउंड्री के अंदर कि वो आपको आके दुख दे। तो पहली बात है, यदि उसने दुख दिया तो आपको उस इंसान से को अवॉइड करना है जो जानबूझ के आपको हार्म करता है, आपको दुख पहुंचा रहा है, और अपने काम पे ध्यान रखना है। पूरे जीवन भर में हमेशा आप लोगों के पास लोग आपके पास आते रहेंगे जो आपको इरिटेट करेंगे, पर आपको उसको प्रैक्टिकली डील करना है, उससे दूर हटना है। अगर आप उससे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो जब वो फोन करे तो आप फोन मत उठाइए। आप अपने रिलेशनशिप के खुद के मालिक हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। हमारे दादा नाना लोग बहुत ही सिंपल लाइफ रहते थे, वहां पे कॉर्ड कटिंग का नहीं था। अभी हमारा जो लाइट एज चल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में 4 टाइप के लोग आएंगे। एक आएगा जो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, आपसे ज्यादा है, आध्यात्मिक रूप से आपसे ज्यादा ऊपर है, और दूसरे जो आपसे स्पिरिचुअली कम है। जो लोग आपसे आध्यात्मिक रूप से हायर लेवल पे हैं, आप उनका कहना मानिए, उनका अनुसरण करिए, उनसे लेसन सीखिए, उनकी शिक्षाएं लीजिए। पर जो आपसे स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है, कम है, जिसको भगवान बुद्ध ने मूढ़ कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। 2 तरीके और लोग भी आपको मिलेंगे जो आपसे पैसे में ज्यादा हैं या पैसे में कम हैं। जो पैसे में ज्यादा हैं उनसे आप फ्रेंडशिप बनाइए, क्योंकि आप, अगर मैं अपने मन से बोल रही हूँ, सर ने नहीं कहा था, क्योंकि जैसे आप फ्रेंड्स बनाएंगे वैसे ही आपके भी लाइफ में एबंडेंस आएगी। ये मैंने पढ़ा था, मैं अपने मन से बोली, सर ने नहीं कहा था मेक फ्रेंड्स कि जो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं। पर जो आपसे कम पैसे वाले हैं, मतलब जो आपसे कम है, उनके साथ आप हमेशा करुणा रखिए। बुद्ध की है ना उपेक्षा मुदिता, एक दिन बताएंगे अपन। हाँ, तो उनके साथ हमेशा काइंड रहिए, करुणा रखिए, और यथासंभव हो सके तो आप उनकी हेल्प करिए। और सर ने कहा कि जो आपसे स्पिरिचुअली लोअर हैं, जिनकी उपेक्षा करनी है, उनसे कभी भी नफरत नहीं करनी है, आपको जस्ट उपेक्षा मतलब इग्नोर करना है। और जो कम पैसे वाले हैं उनकी मदद करनी है। तो सर ने कहा कि आदमी पैसे वाला है या नहीं है, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, एग्जाम्पल करके बताए थे सर ने। आपको ये जो 4 चीजें बताई हूं मैंने, उसके अनुसार आपको ट्रीट करना है। जो हाई स्पिरिचुअली है उनको फॉलो करना है, उनका कहना समझना है। जो कम है उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है, और जो मटेरियलिस्टिक ज्यादा है, आपसे ज्यादा पैसे वाले, उनसे फ्रेंड बनाइए। कम है तो आप उनको हेल्प करिए। तो बहुत ही अच्छा आंसर था। मैं भी शायद उपेक्षा मुदिता ये सब भूल गई थी, आज सर ने मुझे याद दिला दिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया है। अब 7 बजे गुजरात वालों का